ये भी सही अंधारा हो जाए ଅନ୍ଧାର ଆସିବ ଯେ ଚଳିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଅଛି अरे तोलो फिर स्टैंड स्टैंड तोल उठा 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 हम कर ହ୍ୟାଲୋ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ଦେଖୁନ ମୋବାଇଲଟାରେ କୋଉଟାରେ କାଇଁ ଦେଖୁନି ଲିସା ହେଲା ଆସୁଛି କୋଉଟାରେ କାଇଁ ଦେଖୁନି ଲିସା ଏଇଟା ସେୟାର କରିଦିଅ मैं कर दूं ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ହଁ ଆଉ ଥରେ କଲ କି ଆଉ କଣ କରିବା ସେଇଠି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଆସେ ହଁ ଆସୁ ଯାହା ଆସୁ ଚଳେ मेन ଏଇଟାର ପାସୱାର୍ଡଟା ଦିଅ ସାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦିଅ କନେକ୍ସନ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ଭଲ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଟି 1 2 3 ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ କରୁଛି ନହେଲେ କାଳେ ଲଗେଇବି କେତେ ତମେ ତ ମାଇକ୍ ଟାକି ଯାଇଛି ନା ଏଇଟା ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ହଉଥିଲା କି ତମର ଏଠି ଥିଲା ମୁଁ ମୋର ଆଗରୁ ସେଟିଂ ବେଶୀ ନଛି ସେୟାର କରିଦିଅ ଏଇଟା ସେୟାର ହେଇଯାଇଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାଉ ତ କିଛି କରନି ଯାହା ହଉଛି ଆଉ ଚାନ୍ସ ନେଇ ହବନି ଯାହା ହଉଛି ଆଉ ଚାନ୍ସ ନେଇ ହବନି ମୋ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କୁହ ହେ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ସାହୁ ସାରଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦିଅ ପଠେଇଦେବେ ଏଇଟା Students, am I audible? ठीक है चलिए तो हम फोन में चार्ज है
जॉइन कर ठीक होते ना कौन देखो ମୁଁ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଟା ପଠେଇଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ଲିଙ୍କ ଟା ସାଉ ସାର୍ ମୁଁ ପଠେଇ ଯିବା हेलो ठीक है सर प्रॉब्लम है रोज प्रॉब्लम नहीं उल्टा ना हम मोबाइल देखले ना मोबाइल ठीक अछि नहीं एथिर उल्टा देखो लैपटॉप हां मोबाइल ठीक है तो मोबाइल देखिए मोबाइल रे उल्टा आसुजी एक्चुअली पिला देखिबे एमिति उल्टी हां हां देखो पिला के जॉइन करना पिला कैसे कंटेंट करते हैं चार जन वास तो करते चारि बचे चारि भीतर ये सार मु आउ हां पिला रागी पळलानी मला Yes. Is everything fine? Video and audio? So we'll start quickly. Okay. Okay. So first paper केमती हितला आज कि टेक्निकल ग्लिच थिले सेति पय टिके ये हितला काले आज वर्षा हिची तो सेति पय टेक्निकल ग्लिच थिला सेति पय लेट हे गला सो हाउ वाज द पेपर टुडे केमती करछो पिले so we'll start with the first question. Consider the following statements with respect to doctrine of procedure established by law is provided in the Constitution of India. It protects against executive action. It protects against legislative action. Article 22 was incorporated to the Constitution as additional safeguards after debate in Constituent Assembly. In the bank nationalization case, the Supreme Court adopted strict interpretation. So here you might get some confusion about the options because options it is given only one. Actually, it is only one statement is correct. Only two statements are correct. 3 and all 4. Okay. Now the first statement. We know procedure established by law means what? The procedures by what law assigns it. Like first step ta kon hobo, tapare next step kon hobo, third step kon hobo, emiti. So executive action ru banchouchi amako. So first option is correct. First statement is correct. Then go to second. Legislative action. एटी भूल अछि. Legislative action माने पार्लियामेंट रे होउची. सेठी स्पीकर अछन स्पीकर देखिया पई जे स्पीकर जानिया पई अछन जे कोटा भूल होउची कमते ठीक होउची से स्पीकर अछन. सो सेति पई एटा भूल हे जाउची. ए स्टेटमेंट ता भूल अछि.
Next statement is correct. Article 22 was incorporated to the constitution is an additional safeguard after debate in the constitution. This one is correct. Let's go to the fourth statement. In the bank nationalization case, the Supreme Court adopted its strict interpretation. It is strict interpretation नथिला. एठी कोन थिला? एठी गोटे लिबरल टाइप रो इंटरप्रिटेशन देइथिले. सेति स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन एठी हेइ नथिला. सेति पई टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. So your answer कोन हबो? Only two. Then we'll go to the next statement. Next question. Which of the following initiative launched recently by the government of India is not directly associated with carbon trading or emission reduction mechanism? Indian Carbon Market Portal, PAT scheme, Prakriti, National Carbon Registry. Here correct answer कोन हबो? Prakriti. काहे कि प्रकृति टा कोन? एटा गोटे कोन हला? एटा गोटे environmental awareness पई. This is for only environmental awareness. Okay? And this is specifically made for students purpose. For student this specifically it is made. तो सेति पई प्रकृति टा हबो. आउ जो तीनटा स्टेटमेंट रहिला एटी कार्बन मार्केट अछि माने कोन जानि परलो कार्बन ट्रेडिंग कार्बन मार्केट परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम परफॉर्म अचीव ट्रेड जो पैट स्कीम टा कोन पई आस्तिला पैट स्कीम आस्तिला कोन पई पैट स्कीम आस्तिला जो हमर इंडस्ट्रीज अछि माने ग्रीन टेक्नोलॉजी पई से इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करबा जो माने नुवा जिम सेमीकंडक्टर हे गला बा जो माने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन रिडक्शन करथिबे से इंडस्ट्रीज मानको हमको प्रमोट करियार अछि और नेशनल कार्बन रजिस्ट्री एटा गोटे कोन डाटा कलेक्शन पई यार करेक्ट आंसर कोन हैला या करेक्ट आंसर हैला कोन सी ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेजर्ट क्लाइमेट सॉइल्स हमें बेसी डिटेल से कहिबानी हमको जल्दी सारियार अछि तो सेति पई हमको संगे संगे खाली आंसर देखि कि जिबार अछि क्वेश्चन नंबर 3 consider the following statements regarding desert climate and soils arid soils show significant leaching due to rainfall leaching केमिति होबो arid soil पर dry soils पड़ा leaching केमिति होबो so this statement is wrong desert soils are often coarse structure and well drained हां काइना sand एटी अधिक अछि because sand percentage is more that's why this is correct and third statement anti soils are highly developed soils with multiple horizon no anti soils are immature soils by young soil कहि परिबो during our geography class I have already taught this anti soils कोन जोडा immature soils okay तांकर horizons are mainly seen where there is a old soil or mature soil but this is what immature soil सेति पई एटी multiple horizon हमहु देखिया पई मिलिबोनी सो करेक्ट आंसर कोन हबो a okay next question correct the consider the following statements respect to IPCC तार कोन IPCC तार 6th assessment report बाहर करछि बट सी एटी देलानी 6th assessment report ऊपर देलानी सी 5th assessment report ऊपर पछाडछि IPCC was established by UNEP and WMO okay in which year 1988 ता सबले मु कहि छि एटा पढिया पय जेतेबेले मु पढाए सबले लाइन वाइज क्रोनोलॉजिकली एटा सबले मु कहि छि मु क्लास रे IPCC directly enforces emission reduction 5th assessment report highlights rapid warming since 1950s IPCC provides a scientific basis for policy making IPCC कोन scientific basis for policy making तो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन ठीक अछि ओके IPCC directly enforces emission IPCC कोन गोटे रिपोर्ट प्रोड्यूस करे IPCC only produces the report कि से रिपोर्ट ताको देखो देन गो फॉर माने से गवर्नमेंट मानु कहूची जे तमे गवर्नमेंट तमे निज हिसाब रे तमे रिडक्शन टारगेट उडा नियो सेति पे IPCC डायरेक्टली एनफोर्स करेनी IPCC रिपोर्ट रे बाहर कर दे सेति पे ए स्टेटमेंट ता भूल गेला 5th assessment report कहितला highlights rapid warming since 1950s IPCC provides a scientific basis for policy making या कहली तो तीनटा स्टेटमेंट ठीक अछि ऑप्शन कोन होबे आंसर कोन होबो ओनली 3 ओके आंसर कोन हला ओनली 3 okay next question number 5 consider the following statements with respect to PROSOST 2.0 a mobile app launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment okay to screen school children with respect to 20 types of disabilities under the RPWD Act aims at early screening and intervention in integrating the identified children to the social, behavioral and mainstream educational environment. Its integration with UDIAC Plus is pending. UDIAC Plus टा कोन एटा NEP जेतले लागू हैला सेति पई एटा प्लेटफॉर्म टा करा हितला
तो एटा तो पेंडिंग केबे हबोनी काने एटा 2016 रु आसलानी तो एटा पेंडिंग केबे हबो नहीं तो एटा कोन हबो सेति पे एटा भूल हे जिवो फोर्थ ऑप्शन टा कोन भूल हे जिवो इट्स ऑलरेडी डन एटा पेंडिंग नहीं ऑलरेडी डन हे एटा ऑलरेडी करा सरलानी हला तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग ओके तापर एम सेट अर्ली स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन इन द इंटीग्रेटिंग द आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन टू द सोशल बिहेवियरल एंड मेनस्ट्रीम एजुकेशनल एनवायरनमेंट दिस इज करेक्ट ओके and the second statement to screen school children with respect to 20 types it टिक अधिक factual पचार देछि actually that 21 types एटा केते हबो this is actually 21 types okay एटा factually जे पढिथिबो से जानिबो नन एटा जानि होबो actually एटा skip करथिले ही बेटर हेथांदा एटा कोन 21 types अछि आ एटा कोन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एटा मिनिस्ट्री ऑफ कोन एजुकेशन एमओई जो एचआरडी मिनिस्ट्री जो नथिला जो नुवा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हिज तो सेटा तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग देयर ऑप्शन कोन हबो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके consider the following match with respect to आपकी पूंजी आपका अधिकार campaign to reclaim the unclaimed financial assets first bank deposit ପାଇଁ कोन उद्गम पोर्टल इंश्योरेंस प्रोसीड बीमा किरण पोर्टल एटी भूल गेला एटा कोन हबो बीमा भरोसा एक्चुअली दिस इज बीमा भरोसा पोर्टल ओके सो दिस वन इज रॉन्ग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मित्र पोर्टल दिस इज करेक्ट डिविडेंड्स एंड शेयर्स सेबी पोर्टल बोली किछ नहीं डिविडेंड एंड शेयर टा कोन हबो आईई this is IEPFA this is what IEPFA portal so dividend and share टा कोन हबो IEPFA portal so this is wrong तो कोन हे गेला यार आंसर कोन हबो only two statements are correct okay okay now we'll go to the next question match the following biosphere reserve with their corresponding state and year of for national designation okay first is पन्ना मध्य प्रदेश रे अछि जोडा पन्नाटा कोठी अछि मध्य प्रदेश रे सेटा को ईयर कॉन्स्टिट्यूट हेतला पन्नाटा हेतला 2012 11 रे ओके 11 12 कोहंती 11 रे 2011 रे कॉन्स्टिट्यूट हेतला देन नेक्स्ट वन इज नंदा देवी इज 1988 ओके तो बी रो 1 हे गला ए रो 2 हे गला ओके अगस्त मलाई तमिलनाडु एंड केरला अगस्त मलाई जोटा अछि हेटा केबे कोन ये हितला सीटा 2001 अगस्त मलाई 2001 एंड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश मु सब बेले क्लास रे कहिछि 2009 ओके देयर करेक्ट ऑप्शन कोन हबो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी करेक्ट ऑप्शन कोन हबो डी हबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कौन दीजिए with reference to pipeline transportation of oil consider the following statements in regions such as Europe Russia West Asia and India pipelines are widely used to transport crude oil from oil wells to refineries and ports एटा कौन हबो एटा भूल हबो काहे कि इंडिया रे हमर ऑयल वेल कोठु आसिला जदी भी गोटे दिटा अछि जोडा सेटा वाइडली ट्रांसपोर्ट पई यूज होची दिस इज वेरी एक्सट्रीम से जोडे कैच देइछ इंडिया लिखि देइछ यदि इंडिया नथान तने एटा ठीक ही थांदा सो दैट्स व्हाई वी आर एलिमिनेटिंग दिस स्टेटमेंट ओके नाउ विल गो फॉर द सेकंड स्टेटमेंट कौन देइछ pipeline networks are generally absent in Central Asian countries due to difficult terrain and political constraints okay ये ठीक अछि yes or no this is correct general statement it is factual thila Turkmenistan has developed pipeline connectivity extending to Iran and parts of China so this is correct their answer kon he jibo 2 and 3 so right answer is C okay
If students you have any doubt, then you may ask in the comment section. Okay, जो क्वेश्चन डाउट होची तुम कमेंट सेक्शन में पचारि परिबो. Question number 9. With reference to World Trade Organization, consider the following statements. Its headquarters are located in Geneva, Switzerland. Okay, ठीक अछि. As of December 2024, it has 166 member countries. ठीक अछि. India is a founding member of organization. ठीक अछि. It was established in 1945. एठी भूले गला. WTO टा कोन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टा केबे एस्टैब्लिश हितला 1995 कने ता पूर्वपुर कोन थले GATT जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स तो सेति पई एटा केतल आसला 1995 रे आसला नॉट 1945 एटा भूली गला सो करेक्ट एक्शन को करेक्ट आंसर टा कोन हबो 1 2 एंड 3 ओके ओके we'll go to the next question number 10 consider the following major ports of the world and match them with their correct functional classification Maracaibo port Maracaibo port Maracaibo Venezuela रे बे सुनिथिले काहे केडा आछि करंट अफेयर रिलेटेड हे परिबो की कहबो जियोग्राफी रिलेटेड बट करंट अफेयर एटा थिला कोन पई मु जियोग्राफी क्लास रे वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास रे सबले पढाए माराकाइबो एटा कोन पई ऑयल पोर्ट कने वेनेजुएला रे कोन अछि ऑयल रिजर्व सबुट हाईएस्ट अछि वर्ल्ड रे सेति पई एटु जान नै थांतो रोटरडैम यूरोप टा कोन गुड एंट्री पोर्ट माने जान छ कोन एंट्री पोर्ट मींस माने सपोज ए प्लेस इज देयर बी ओके एट गुड ए प्लेस अछि और एट गुड सी प्लेस अछि एटु शिप टा नै के आसीबो एठी माल अनलोड करिवो एठी अनलोड हैला परे आ गुटे शिप ताको नै के जीवो सी जगह को तो ए जो बी पोजीशन जो पोर्ट टा रहइला सी पोर्ट टा रहइला एटा कोन कोले काम करिवो एंट्री पोर्ट वाटे भले काम करिवो क्लियर तो रोटरडैम जो यूरोप रे अछि सेटा कोन एंट्री पोर्ट वाले काम करूछ क्लियर नेक्स्ट कोची इंडिया टा कोन नावल पोर्ट ओके एडेन येमेन एटा वर्ल्ड जियोग्राफी रे पढाए सब बेले एटा पोर्ट्स ऑफ कॉल थाए पोर्ट्स ऑफ कॉल माने कोन बाय चांस ଗୋଟେ इमरजेंसी आसिला तेल सरी गला किंबा किछि शिप रे किछि खराब हे गला मशीन खराब हे गला किछि पार्ट्स खराब हे गला सेही समय रे कोन एटा सब रास्ता रे अधा रास्ता रे थिबे सपोज दिस इज प्लेस ए एंड दिस इज प्लेस बी या भीतर डिस्टेंस धरो 1 माने 10000 माने 5000 किलोमीटर थिबो तो 3000 किलोमीटर जाउ जाउ तार शिप खराब हे गला किंबा तेल सरी गला सेट से कोन थिबो एठी ଗୋଟେ पोजीशन इमिति पी थिबो ଗୋଟେ प्लेस टे सेट ता पारे ଗୋଟେ पोर्ट थिबो शिप टे जहाज टे जाके एठी मुडी जीवो एठी रहला एठी तेल भरला किंबा रेस्ट नेले ता सेलर माने एई जो पोर्ट टा रहला पी पोर्ट एटा कोन हे गला पोर्ट ऑफ कॉल हे गला कॉल माने इमरजेंसी सिचुएशन रे रहया पे तो एउ तुम एलिमिनेट करके मार देथन एटा क्लास रे मु सब बेले कोइ पोर्ट्स ऑफ कॉल एडेन येमेन ओके तेरा कोन हबो आंसर कोन हबो डी हबो आंसर ओके तेरा आंसर कोन हबो डी हबो आंसर ए जो ब्लू मार्क करा है सेटा ऊपर जाओनी हैला से जार क्वेश्चन पेपर से मार्क करछि मु जोडा रेड रे मार्क करछि सेटा ला तार रियल आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements about educational policy and learning outcomes in India and Odisha NEP national education policy बारंबार क्लास रे कहिछि NEP 2020 सब बेले बहुत इंपोर्टेंट काइन एबे एटा everybody please wait टेक्निकल ग्लिच होछि एक्चुअली वर्षा पई ये होछि ओके एनईपी 2020 कि टेक्निकल ग्लिच अछि आज वर्षा आइछ तो जोर से सेट में टेक्निकल ग्लिच रहउछ तो सेटा तो नेचर ये किछ करी होबनी ओके क्वेश्चन नंबर 11
NEP 2020 recommends home language or mother tongue as medium of instruction until at least grade 5, but Odisha faces challenges due to multiplicity. Okay. Second statement kon, Odisha's Mo School Abhijan has been successful in mobilizing alumni funds for infrastructure, but studies show weak correlation between infrastructure and learning outcomes without pedagogical reform. ESSER report ऊपर देला 2023 report ऊपर कौन देला 95% remains high proportion of class 3 children who can read class 2 level has declined compared to pre-COVID levels. तापर जीवा में नेक्स्ट ओडिशा शिक्षा सहायता योजना provides scholarship for higher education to SC, ST, OBC students, but renewal requires 75% attendance, which is difficult for wage laborers. यार ऑप्शन कौन होबो, आंसर कौन होबो? यार आंसर होबो कहि दोछि काहे कि यार आंसर सुनो रेकमेंड करछि जो मदर टंग लैंग्वेज टाकू मीडियम ऑफ अंटिल एटलीस्ट क्लास ग्रेड 5 एठी कैच अछि ग्रेड 5 टा कैच अछि एठी तापर नेक्स्ट एठी जो रिपोर्ट टा वो ऑप्शन 4 टा ठीक अछि ऑप्शन 3 टा इज डिक्लाइन 95% रिमेन्स हाई माने केबे एटा एक्सट्रीम स्टेटमेंट 95% ऊपर एनरोलमेंट रेशियो पळेबो तो से जो दुईटा स्टेटमेंट पई हमर से दुईटा भूल हे गला तेरे ऑप्शन कौन हबो ओनली 2 ओके ओके लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध इज ए ट्रियम्फ विदाउट रिजल्ट्स की कहितले एटा डायरेक्ट आंसर एटा तो किछ नहीं फैक्चुअल स्टैनली लैन पोल ओके क्वेश्चन नंबर 13 who confessed the defeats of many beliefs and brain weights will not destroy them I can ruin the resources by land but I cannot dry up the sea एटा किए कहितले एटा जानछो कि कहितला हैदर कहितला हैदर अली एटा को समय कहितला जेतळ एंग्लो मैसूर वार ओके एंग्लो मैसूर वार समय रे हैदर अली एटा कहितला ओके बहुत पिला मु बुझुतली से माने कहउतले कि टीपू सुल्तान मारछन बट टीपू सुल्तान ने एटा हैदर अली हबो ओके हैदर हबो ओके विल गो फॉर द नेक्स्ट महलवारी सिस्टम इन ओडिशा महलवारी की आनथिला यू माइट बी रीजिंग माने हमें महलवारी पढुछु स्पेक्ट्रम रे किंबा अन्य स्टैंडर्ड बुक्स रिसर्च मटेरियल रे भी अछि महलवारी टा कोठो आनाइतला काना हम इंडियन पर्सपेक्टिव रे पढु बट ओडिशा पर्सपेक्टिव रे पचारछि इंडिया रे हमेला की आनिथिले फर्स्ट हॉल्ट मैकेंजी केबे आनिथिले 1822 रे सो लगभग एई वर्ष भितरे हमर कोन हेतला ओडिसा रे भी महलवारी सिस्टम लागू हेतला एटा कोठी संबलपुर रे यार करेक्ट आंसर कोन संबलपुर महलवारी सिस्टम रे कोन होबो ग्रुप ऑफ विलेजेस मानन गुडे महल वलिया कर देबे तांगु ग्रुप कर देबे सेउटु एबे कोन कर आदाय होबो क्लियर त कोन हला संबलपुर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ओपनिंग ऑफ कॉलेज इन कटक टुक प्लेस इन व्हिच ईयर कॉलेज जो कटक रे जो कॉलेज टा हला सेटा को ईयर रे हितला 1868 ओके तो यार ऑप्शन कोन है आंसर कोन हला सी होबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 examine the following statements statement 1 कोन कहला the courts are prohibited to inquire the advice given by the ministers to the governor the minister have no local responsibility as per the constitutional provision एटा कोन होबो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन दैछि तो courts are prohibited to inquire to the advice given by the minister to the governor ओके गवर्नर नुहे प्रेसिडेंट को भी एटा दैछि कोन स्टेट ऊपर यूनियन रे भी सेंटर रे भी कोन जेतले मिनिस्टर्स माने किछि धरो कैबिनेट मिनिस्टर जेमते हम राजनाथ सिंह रहले बा निर्मला सीतारमण रहले बा जो माने भी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्ट्री रहले सेमान जदी किछि कथा एडवाइस दोचंती प्राइम मिनिस्टर माने प्रेसिडेंट को से प्रेसिडेंट सेही जो एडवाइस टा सेटा कोर्ट इंक्वायर करि परिबो नै सेटा केतले इंक्वायर करि परिबो जेतले थरे गुटे हेई सारला परे धरो बाय चांस गुटे डिसिजन देले कि डिमोनेटाइज कर दियो आज तो प्रेसिडेंट गुटे कोन कानून पारित कर देबे आउ थरे डिमोनेटाइज करिया पय माने पार्लियामेंट सेशन नहीं बट प्रेसिडेंट कोन कानून पारित कर देबे ओके तो सही समय कोन ता पर ही जे कोर्ट इंटरवीन करी जदी कोर्ट देखियो लीगैलिटी अछि कि नै कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अछि कि नै सेठ जे कि कोन कोर्ट इंटरवीन करियो बट जो एडवाइस ता दोछि सही समय इंक्वायर करि परिबो नै सेति पई स्टेटमेंट कोन हला ठीक अछि
Statement 2, the ministers have no legal responsibility as per the constitutional provision. ठीक, मिनिस्टर मानकर कोन लीगल रेस्पोंसिबिलिटी किछि नै एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. ओके, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट. तो एठी हमें कोन देखिबा एबे देखिया जे यार करेक्ट एक्सप्लेनेशन होची कि नहीं. स्टेटमेंट देखो, बो स्टेटमेंट करेक्ट एठी करेक्ट एक्सप्लेनेशन अछि कि नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं अछि कि नहीं. एठी कोन करेक्ट एक्सप्लेनेशन अछि कि नहीं. किमते दीटा इंटर रिलेटेड कोठी हला. ओके, ए दीटा इंटर रिलेटेड किमते हबो. एठी कोन हे जिवो ऑप्शन बी हे जिवो. यार ऑप्शन कोन हबो बी हे जिवो. काइना दीटा ठीक अछि स्टेटमेंट, बट एटा एक्सप्लेन कोनी. सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करू नहीं, तार रीजन टा नुहो. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द 17 नंबर क्वेश्चन. किसी डाउट थिबो दी पिला कमेंट सेक्शन में पचारिबो हैला. 17 number question. Consider the following statements regarding aquatic organisms. Plankton are small organisms that float in water. मैं environment class से बारंबार कोई कि तंटी सुखी जीवो. Plankton सा कोन float in water. Nekton includes organisms that actively swim in water. ठीक अछि. Benthos are organisms that live suspended in the water column. एट भूल गेला. What I have told, benthos कोन थांदे. Benthos are organisms से माने कोन करंती बोरो करी रहंती. तुम गाँव थिला देखि कि नहीं, तो सब जेनजी हो गलानी. बट आगुर कौन थिला, बेंथोस माने कौन जो कंकड़ा धरती नहीं. बेंथोस माने कौन, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर क्रैब्स. कंकड़ा माने केबे पानी ऊपर होंती वाटर कॉलम रे. सी जो लिखि जे से माने कौन बेंथिक जोन ने थांती, माने माटी से माने हमर पानी जो तळ लेयर ता सहित जो माटी कनेक्टेड अछि सेही भितरे बोरो करी रहिथिबे गात भितरे. क्लियर. सेति पे से देछि बेंथोस आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव सस्पेंडेड इन द वाटर कॉलम. किमिति वाटर कॉलम में सस्पेंडेड ही रहिबे, सेनपा माटी भीतर रुहंती. माटी पानी जोडी कनेक्शन थिबो जोडी जॉइन होतो सेही ऊपर लेयर रे ही लागि कि थिबे माटी भीतर पसिगे. तो सेति पे ई स्टेटमेंट ता दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो हमें कोन हबो आंसर ता 1 and 2. ओके, जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू साइक्लोन्स, साइक्लोन फॉर्मेशन रे फिजिकल जियोग्राफी रे पढाई छी कोन इंपोर्टेंट कोन दरकार साइक्लोन ओडे फॉर्मेशन हो पय. जो चक्रवात तयारी होउची सेटा होबा पय कोन दरकार. कोन फर्स्ट स्टेटमेंट कोन पढिथिली सब बेले 27 डिग्री सेल्सियस होबार अछि. यदि समुद्र रो सरफेस टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहिबो कि ताटू अधिका हबो ताहाल जाय कि साइक्लोन फॉर्मेशन हबो. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ता करेक्ट अछि. हाई प्रेशर जोन्स इनिशिएट साइक्लोन्स. जदि गोटे पिला न्यूज वीडियो देखुथबो ना, से जानबो हाई प्रेशर जोन केबे हबो एटा लो प्रेशर जोन. सेति पय तो कोनते लघु चाप हेछि. लघु माने कोन छोटो, चाप माने कोन प्रेशर, लघु माने लो. लो प्रेशर रे ही लघु चाप हेला पर ही साइक्लोन ता आसे. तो हाई प्रेशर किम दबो. तो ए स्टेटमेंट ता भूल गेला. विंड स्पाइरल्स इनवर्ड्स टुवर्ड्स लो प्रेशर सेंटर. ठीक अछि. लो प्रेशर ता होछि चारि आडू विंड उडा आसुची हेगी गुटे रोटेटिंग फॉर्मेशन नोचंदी, सेउटू आसुची कोन साइक्लोन आसुची. क्लियर. साइक्लोन्स मूव टुवर्ड्स रीजन ऑफ हाई प्रेशर, रीजन्स ऑफ व्हाट लो प्रेशर. हैला सेति पय स्टेटमेंट ता भूल गेला. एटा ठीक अछि. साइक्लोन्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम ओशन हीट. एटा ही तो तांको फ्यूल ता ना, एटा तांको इंजन. सेति पय जति साइक्लोन सब समुद्र ऊपर हुए, लैंड ऊपर होबार देखिछो साइक्लोन. तो सेति पय कोन हला 1 3 and 5. तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट. 18 नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट अछि. तापर जीवा 19 नंबर क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आउटकम्स ऑफ कॉप. सेति पय कहले कॉप समिट उडा एटलीस्ट मु स्टूडेंट्स मानु कहिथिली कॉप समिट उडा 29 30 29 पूर्व वर्ष हेतला, 30 एई वर्ष हेतला. ए दिटा देखि कि जीवा पय. Consider the following COP 30. Belém package focuses primarily on setting new binding emission targets. भूल एठी. न्यू बाइंडिंग नो जहां हमरो एक्जिस्टिंग थिला टारगेट्स ताकू हमें कोन करबा जहां हमरो एक्जिस्टिंग टारगेट्स अछि ताकू ही नै कि हमें कोन करबा तापर फोकस करा होछि. सो दैट्स व्हाई न्यू टारगेट ता भूल. सेति पय फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ग्लोबल मुतिराव एग्रीमेंट prioritizes implementation over ambition. ग्लोबल जो मुतिराव अमेंडमेंट थिला एग्रीमेंट थिला से कोन करछि प्रायोरिटाइजेस इम्प्लीमेंटेशन ओवर एम्बिशन. माने तुम इम्प्लीमेंट करो, तुम खाली टारगेट नै गले हबनी. हमें आसुचु खाउचु बसुचु सेठी लीडर माने बसिले बट कथा है कि पळे अनती. सब कप रे से सब मीटिंग रे सेया होतला, आसीबे भाषण देबे पळांती. तो एई जो कप 30 टा तो हैला से समय कहले कि ना ए एग्रीमेंट अनुसार कोन तुम इम्प्लीमेंट करो, जिनसटा कार्यकारी करो,
खाली कहि देई गले हबनी दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट द जस्ट ट्रांजिशन मेकानिज्म इंक्लूड्स लीगली गारंटेड किछि नथिला से खाली कहि थिले कि तुम टार्गेट उडा फॉलो करो सिंपली लीगली किछि नथिला एथिरो सेति पई से ए स्टेटमेंट भूल हे गला द ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन ट्रैकर इज इंटेंडेड टू एसेस अलाइनमेंट विथ द 1.5 डिग्री सेल्सियस जोटा हमर आईपीसीसी भी टारगेट दोउची सेति पई स्टेटमेंट ठीक ओके तर कोन हे जिवो 2 and 4 डी ओके 19 रो डी हबो देन 20 क्वेश्चन नंबर 20 इंडिया इंटीग्रेट्स बायोडायवर्सिटी फाइनेंस विथ डेवलपमेंट प्लानिंग दिस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स एटा कोडी बेस्ट रिफ्लेक्ट होउची कोडी होउची ग्रीन वाशिंग होउची कि बायोडायवर्सिटी फाइनेंस ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैराडिज्म तुम एटी ऑप्शन देखु देखु जान नबो कमांड इकोनॉमी फिस्कल फेडरलिज्म एटा किछि नै बायोडायवर्सिटी दिछि बायोडायवर्सिटी फाइनेंस ग्रीन वाशिंग कोन तुम एटा मिछता कहतो जेमिति हमरो वोक्सवैगन कंपनी कहितला वोक्सवैगन कंपनी तानारे केस चलतला जो सी कोन कहितला सी तार एमिशन होतला पोल्यूशन होतला एमिशन रे बट सी कोन देखौतला तार फॉल्स मीटर उडा एमिति कर देतला देखला जे मोर एमिशन बिल्कुल हो नै सेटा कोन ग्रीन वाशिंग माने तुम कार मुंडो ब्रेन वॉश कर दोउछो बुझिला दैट्स व्हाई दिस इज ऑप्शन नंबर बी ओके विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कोड हेतला ऑटोमेटिक को क्वेश्चन लगाइतला सो क्वेश्चन नंबर 20 टा कोन थिला एबे ठीक अछि तो स्टूडेंट्स नाउ इट इज फाइन Students, is it fine or not? Okay. Question number 21 टा कौन थिला? एटा लक्ष्मीकांत रे ऑलरेडी थिला. एटा कौन है जी आर्टिकल 39 B and C. Okay. Next. Question number 21. In which article of Indian Constitution doctrine of estoppel कोथि अछि is found तो मते estoppel माने जान नथिबो तो better you should leave that question एटी बेटर कोन होबो तमे मु तथापि बुझी दोछ एस्टोपेल माने कोन एक्चुअली हम पढंती निते डॉक्ट्रिन्स जाको मेन डॉक्ट्रिन जेम डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इन द मेन डॉक्ट्रिन किछि पढंती बट डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल जोडा दैट मींस व्हाट it stops individuals from making inconsistent मके लिखि दोस तापर ता मानेटा बुझेबी ओडिया रे claims to ensure fairness ensure करिया पे and prevent fraud कोन fraud ओके डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल कोन कहूची कि हमर जो एटा एक्चुअली कोर्ट लागू है जुडिशियरी रे जे तमे को गोटे इंडिविजुअल सी तार पुराना किछि स्टेटमेंट देइची बट नेक्स्ट सी ता स्टेटमेंट रु ओरी जाउची जे नाम एटा कहि नै तो एमी जदी बारंबार अलग अलग स्टेटमेंट दबो देन कोन होबो कंफ्यूजन क्रिएट होबो हैला कंफ्यूजन क्रिएट होबो फेयरनेस आसीबोनी फ्रॉड भी हे पारे दैट्स व्हाई डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल से पूछे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोठी होची हमर कोठी भी नहीं तो ये जो आर्टिकल है नॉन ऑफ द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नहीं कौन सा आर्टिकल नहीं एटा कौन डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल ओके अंडर हुज प्राइम नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो क्वेश्चन नंबर 23 अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीएट जोड़ा थिला सेटा कोन हे गला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हे गला कहां अंडर हेतला दिस वाज अंडर मोरारजी देसाई ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 24 23 टा कोन हैला बी हैला 24 कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू पिग्मी हॉग को नेकी पचारची
It is the rarest species of wild thing. Okay. It inhabits in the tall, dense, wet alluvial grasslands of Himalayan southern foothills. It is critically endangered. Their conservation was started by trust founded by Gerald Dorrell. Okay. First statement jiba. Rarest species of wild pig. Clear. It inhabits in the tall, dense, wet. It actually am India कोड मिले ना आसाम रे मिले. और ता habitat ता ही actually alluvial soils. आसाम रे कौन ब्रह्मपुत्र flow होची. तो सर जो alluvial plain ता सेही ही सेमाने रुहंती अधिकांश. Tall, dense, wet alluvial grassland. सेमाने तो forest prefer करंती नहीं. तो जेहेतु आसाम और नियर बाय रीजन से माने कौन सदर्न फुटहिल्स रे आछथि माने सेही टेम्परेचर रे ग्रो करछन ता हैबिटेट ता दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट इज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड. यस दिस इज करेक्ट. देयर कंजर्वेशन वाज स्टार्टेड बाय ट्रस्ट फाउंडेड बाय जेराल्ड डोरेल. एटा भी ठीक अछि. तो 24 कोन हबो डी कोन रहि छै. We'll go for question number 26. 25 ta only 4. Okay. Question number 26. Presently, a 9 judges bench of the Supreme Court is hearing the Sabrimala reference. Okay. Consider the following statements relevant to the 9 judges bench of Supreme Court. It is as per Article 145 clause 3 of the Constitution. Case Puttaswamy versus Union of India case. Indira Sohani and others versus Union of India case. SR Bommai versus Union of India and others case. Okay. इधर कौन होगा? All 4 are correct. 26 रो कौन? चारिटा अंक ठीक अछि. Okay. All 4 are correct. Okay. We'll go for 27. Which of the following statements about the children's Booker Prize is not correct? सब वाले कीवर्ड को हाईलाइट कर दो. जेतले भी एग्जाम दियो सब वाले कीवर्ड को हाईलाइट करथबो. बिकॉज़ बहुत पिला एमती माने भूल करते तुमको आसुथबो क्वेश्चन बट तुमे जल्दबाजी रे कोन करो पढ़ो नहीं तार जो कीवर्ड्स ला पढ़ो नोट करेक्ट वगैरह पढ़ो नहीं. Okay. It will be awarded annually from 2027. Yes, this is correct. से हम 50 not correct but मु statement एबे कहि दोछि which statements are correct. इरे ठीक अछि. This statement is correct. 2027 रु दिया जीवो. It will be awarded annually. जेहेतुरा ठीक अछि तो this one will be wrong. इट wrong statement. The founding partner and principal founder of it is AKO Foundation. It is correct. The founding partner and principal, if this one is correct, this one is wrong. Okay, see I'm not correct. So option will be 2 and 4. Clear? Now we'll go to the next question. Which one of the following processes, question number 28, involves a decrease in entropy? Entropy माने कौन? Students, entropy माने कौन? Entropy माने randomness. जो बड़ा बड़ी होतबे गोटे लाग जार रे नै जीवो तमे गैस मॉलिक्यूल्स थिबो बड़ा बड़ी होतबे ताको तले हमें प्रेशर दियंती ना सेही समय कोन हो मॉलिक्यूल्स रा कोन जे स्पेस कमी जाय तो स्पेस कमी जीवो सेही समय कोन हो एंट्रोपी टा कमी जीवो. क्लियर? सेति पई कोन होबो एंट्रोपी कमीबो केतळे जेतळे कोन होबो ना दीटा जेतळे जिंस किछि मिसि जाउथबो माने मॉलिक्यूल्स कमी जाउथबो. एट देखो कने त मॉलिक्यूल्स कमी जीवो सेतळे कोन रैंडमनेस कमी जीवो. ओके. सो 28 टा कोन होबो बर्निंग ऑफ कोल इन एयर. यदि कोल टा बर्न होबो कने कोन कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसीबो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीवो. ओके तो एंट्रोपी बढ़िबो. इवापोरेशन ऑफ वाटर इवापोरेट कला गैसियस फॉर्म को गला तो एंट्रोपी कोन बढ़िबो ता रैंडमनेस बढ़िबो अधिका मॉलिक्यूल्स माने कोन बम्बार्डमेंट हेबे. देन मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट होबो सॉलिड स्टेज को लिक्विड स्टेज को जाउची जेतोले स्टेजेस चेंज करे सॉलिड रो लिक्विड रो गैस सेतोले कोन होबो एंट्रोपी कोन होबो ऑब्वियसली एंट्रोपी कोन हे जीवो कहलो बढ़ी जीवो. से कोन को डिक्रीज इन एंट्रोपी माने एंट्रोपी कमियो केतोले जेतोले कोन हे जीवो फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया माने दुईटा मॉलिक्यूल्स थिले मिसी के एबे गोटे हे गले 10टा मॉलिक्यूल्स थिले 10 एथरो नाइट्रोजन रो धरो 10 मॉलिक्यूल्स थिले आ हाइड्रोजन रो 10 मॉलिक्यूल्स थिले नाइट्रोजन आ नाइट्रोजन 10 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन रो 10 मॉलिक्यूल्स एबे सेटा मिसी के NH3 बनी गले कोन हे जीवो एबे एटा 10टा NH3 हला आगुर जेतोल 20 मॉलिक्यूल्स थिले एबे एटा कोन 10टा मॉलिक्यूल हे गले तो सेति पई कोन हबो
एंट्रोपी कमी गला से पचार कोन डिक्रीज तिमे बी ऑप्शन इज करेक्ट 28 रो बी हबो 29 with reference to the geomorphical evolution of the peninsular plateau of India match the following hill ranges okay Aravalli range Nallamala hills ये सब इंडियन जियोग्राफी रे पढंती हमें Aravalli range Nallamala hills ये सब हम कोन इंडियन जियोग्राफी रे पढंती जावड़ी हिल्स आ कोन महेंद्रगिरी हिल्स महेंद्रगिरी कोठी अछि ओडिसा रे जावड़ी कोठी तमिलनाडु रे ओके Aravalli राजस्थान रे Aravalli range टा पूरा okay we'll go to the option directly first Aravalli range high denoted एटा हम कोन कोंती रेसिडुअल माउंटेन कोंती ओके सो एटा कोन हबो 1 सहित लिंक अछि नेक्स्ट बी टा कोन हबो नल्लामला हिल्स टा कोन structural hill range forming a major segment of the eastern ghats okay टा कोन नल्लामला हिल्स जावड़ी हिल्स टा कोन हबो जावड़ी हिल्स dissected plateau remnant representing fragmented eastern ghats जावड़ी हिल्स एटा हेगला महेंद्रगिरी हिल्स north eastern discontinuous extension of the eastern ghats coastal plain okay so पूरा लाइन वाइज ही अछि एक्चुअली किछि मैच ही करियार नथला सो मैच डी ऑलरेडी अछि तेरा ऑप्शन कोन हबो ऑप्शन बी ओके ऑप्शन कोन हबो ऑप्शन बी ओके कोन बी टा हबो ऑप्शन ओके नेक्स्ट जिबा हमें there might be some glitches in between please bear with me okay consider the following statements regarding the statutory definition of disaster as provided under NDM Act disaster management act 2005 अनुसार it covers event disaster management act अनुसार okay it covers events arising from both natural and anthropogenic causes including those due to accidents or negligence okay ठीक अछि एटा it necessarily entails a large scale loss of human life for an event to be classified as disaster not necessarily गोटे जोरदार डिजास्टर हम एत लोक मरी जीवे लक्ष लक्ष लोक मरिबे तापर जाई तो डिजास्टर कहबे सेमति किछ नै दुईटा तीनटा लोक जदि डिजास्टरटा लार्ज स्केल गोटे हेतिबो तो डिस्ट्रक्शन हेला पब्लिक प्रॉपर्टी रो ताहाले भी ताको स्मॉल स्केल हेले भी चलिबो ओके एंड डिजास्टर हे परियो तो एई स्टेटमेंटटा भूल अछि it includes damage to property the environment and resultant human suffering obviously it is characterized by an occurrence of such nature or magnitude that it exceeds the coping capacity of the affected community ठीक अछि so यार ऑप्शन कोन हो आंसर कोन हो 1 3 and 4 ऑप्शन नंबर बी okay next question number 31 with reference to oil seeds in India consider the following statements oil seeds are cultivated primarily for the extraction of edible oils dry land regions such as Malwa Plateau, Marathwada, Gujarat and Rajasthan are important oil seed growing areas. Oil seeds occupy about 1/3 of the total cropped area in India. Groundnut, rapeseed and mustard, soybean and sunflower are major oil seed crops in India. Good habo. Oil seed occupy about 1/3. ठीक है एब्सर्ड लागुनी मान जदि हम तीन भागरे हम विभक्त करिबा जति हमर क्रॉप लगा होची तने एक तृतीयांश हम खाली oil seed ही रहइबो नो दिस इज रॉन्ग एटा एक्चुअली तुमको जणा हबा नथिला कि फैक्ट केते परसेंटेज रहउची बट तुम बाय सिंपल एलिमिनेशन तुम करि पारथांतो 1/3 तक एबे हबन कान हमर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी रहउची वेजिटेबल क्रॉप्स भी रहउची पल्सेस भी रहउची लेगिमिनस क्रॉप्स भी रहउची डाल्स पल्सेस रहउची व्हीट राइस तो बड़ एरिया रे स्प्रेड अछि तो 1/3 केमिति हिजिबो ऑल सीड माने दे 1/3 इतना हम इंपोर्ट थोड़ी करथांते हम तो एबे भी इंपोर्ट करछन ना वी आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट साउथ ईस्ट नेशंस साउथ ईस्ट कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया मलेशिया फॉर ऑयल एटा कोन हे जो ए स्टेटमेंट भूल हे जो एटा कोन हो 14% एक्चुअली दिस इज ओनली व्हाट 14 स्टेटमेंट 14% so correct answer is what only 3 okay we'll go to the next question 32 which one of the following correctly describe the geographical behavior of Bahuda Vansadhara and Nagavali rivers Bahuda Vansadhara और Nagavali rivers 32
They originate in Chhattisgarh and flow through Odisha and Andhra Pradesh. They originate in Odisha and terminate within the state. Next option, they originate in Odisha and flow into. They originate in Odisha and flow into Andhra Pradesh before joining Bay of Bengal. They originate in Andhra Pradesh and flow into Odisha. 32. এটা তুমি জানিଥିଲେ জিওগ্রাফি জানিଥିଲେ ହିଁ କରିପାରିବ 32 টা কোন হবো দে অরিজিনেট ইন ওড়িশা ওড়িশা ରେ অরিজিনেট होचंती आंध्र प्रदेश को फ्लो करचंती बिफोर जॉइनिंग बे ऑफ बेंगल मु गोदावरी वगैरह पढेला बेले तो स्मॉल रिवर्स पढौची ई क्लास टा मु पढैची एटा स्टेटमेंट टा मु सेति पय डायग्राम करी पढाए कोठी ओरिजिनेट होची कोठी पुणे स्टेट देखि जाउची कोठी जाई मिसुची जो जिंसडा मु सबले कहउतली पिला एटा एक्सेप्ट करनथले एबे देखो क्वेश्चन आसी वाला ओके with reference to the power sector in Odisha, Odisha Power Generation Corporation OPGC plays a significant role in thermal power generation in the state. OPGC केबे incorporate हेतिला पचाच डायरेक्ट 14 November 1984. Okay, consider the following description of a demographic trend in India between 1971 and 2021. India's total fertility rate declined from 5.2 to 2.0. During the same period, the proportion of population aged 60 years and above increased from 5% to 10%. Working age population 15 to 59 peaked around 2020 and is projected to begin declining after 2040. Okay. से पचारछि कोन एई description अनुसार which of the following statement is most accurate? India has already entered the fourth stage of demographic. बिल्कुल नो. India एबे भी थर्ड रे अछि. The demographic dividend window in India is now closed because the working age population has already started declining. No. India's TFR is still above replacement level. बिल्कुल नो. Indian TFR is what? 2.1 or below. Okay. So the population will continue to grow. So answer D टा ठीक अछि. कोन? Option D. एना तीनटा ऑप्शन भूल हे गलानी तो ऑप्शन डी टा ठीक. तो increase in elderly population means India will face aging population. सेटा होछि हमर कोन? मोस्ट जति सब एडवांस नेशंस जिंदे जापान हे गला, सिंगापुर हे गला, ऑस्ट्रेलिया हे गला, साउथ कोरिया हे गला. They are fighting with the population demographic performance. काहे कि तांकर एजिंग पॉपुलेशन अधिका अछि. कोन पई होछि एटा? काहे कि हमर कोन? हेल्थ केयर बढ़ुची ओके हेल्थ फैसिलिटी बढ़ुची बट पॉपुलेशन कंट्रोल भी चलछि हेल्थ फैसिलिटी बढ़ले बुढ़ा माने एबे बंचुचंती अधिका वर्ष आ पॉपुलेशन कंट्रोल चलछि माने एबे रिप्लेसमेंट कम होबो छुआ अल्प जन्म हेबे ता माने कोन हम पॉपुलेशन एबे कोन बुढ़ा मानक संख्या बढ़ी जाइछि से सेइटाटा लेखिछि जोटा तुम इजीली भाबु न ई जिंसटाको सेइटा को खाली बड़ खाली इंग्लिश लैंग्वेज लिख दिछो किछि नै द इंक्रीज इन एल्डरली पॉपुलेशन मींस इंडिया विल फेस एजिंग रिलेटेड चैलेंजेस while the working age population is still large. Working age population में थिबो बट हमको कोन एजिंग प्रॉब्लम सुडा होबो ओके विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम डी होबो आंसर 34 डी consider the following statements about targeting and leakage in poverty alleviation programs in India and Odisha. हेलो इंडिया ओडिसा रे कोन जो लीकेज पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जोड़ा अछि तार लीकेज जो सब होछि इंडिया ओडिसा रे तार ता ऊपर पचारछि Aadhaar based biometric authentication of PDS in Odisha has reduced duplicate ration cards. ठीक अछि. Odisha one nation one ration card implementation allows migrant workers from Odisha to access subsidized grains in destination states. सेहि पई तो करा हितला one nation one ration card. माने अन्य स्टेट रो लोक जदि ओडिसा आछि माइग्रेट ही करकी ताको रेशन दरकार अछि से सेही जो कार्ड ता तार राजस्थान रो कार्ड ता से नेकी देख ओडिसा रे देखेले पीडीएस स्टोर रे ताको भी चावल मिलिबो ओके सेति पई वन नेशन वन रेशन कार्ड आसिला डीबीटी फॉर मनरेगा वेजेस इन ओडिसा हैज रिड्यूस्ड करप्शन बट नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड डिलेज डिले होछि फंड रिलीज डिले होछि एससीसीसी 2011 data still used for targeting has not been updated leading to inclusion of household that have exited poverty and inclusion of new poor एटा भी ठीक अछि स्टेटमेंट सो ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तेरा आंसर कोन हबो ऑल फोर आर करेक्ट ओके हमें जिबा बे नेक्स्ट 36 population distribution between rural and urban areas is best represented using which of the following graphical methods एटा कोन हबो एक्चुअली ए डॉट्स एंड स्फीयर हबो ओके एटा जानिथिले करि परिबो नने तुम केबे ग्राफ रे देखथिबो एटा डॉट्स गुटोड देथिबो पुन स्फीयर देथिबो एमति ओके तो डॉट्स एंड स्फीयर ता कोन करा जाय population distribute between rural and urban areas को देखिया पे रिप्रेजेंट करिया पे मैच द करेक्ट पेयर ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 37 37 कोन देछि एपट लाइन ता पडुथबो एपट लाइन ता पडिबो बे मैच करिवो
एटा मोनिटारिज्म मोनिटारिज्म किए देथिले खाली गोटिए तो जानियार अछि मोनिटारिज्म देथिले मिल्टन फ्रीडमैन तुम एटा पढुछ तुम इकोनॉमी टेक्स्ट बुक रे ए गोटिए तो जानिथिबो ना मो एटा 4 हबो तापर आराम से सब हो जिवो कने एटा दे 4 जानि नेलो ना तापर आ सब टिक मार दो ओके नेक्स्ट जीवा 37 कोन हबो बी हबो 38 मुद्रा राक्षस narrates the ascent of समुद्रगुप्त टू पावर मालविका अग्निमित्रम ड्रामा बाय कालिदास हैला about the Sunga ruler Agnimitra Milindapanno conversation between Minendar and Nagasena दात वंश ए बुद्धिस्ट सिलोनिस क्रोनिकल ऑफ टूथ रेलिक एटा हिस्ट्री बुक रे पढिथिबो एटा तमरो एंशिएंट हिस्ट्री रे तमरो अछि ओके ए स्टेटमेंट अछि दात वंश मिलिंदपानो विषय अछि और मुद्रा राक्षस विषय कोन एटा काहे के स्टेटमेंट ठीक अछि एटा ठीक अछि ओके सो को स्टेटमेंट दिया ठीक अछि फर्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट ठीक अछि मु तुम कोन कहली दात वंश कोन बुद्धिस्ट सिलोनिस माने कोन हम श्रीलंका को सिलोनिस कहतले सिलोनिस क्रोनिकल माने श्रीलंका क्रोनिकल टा ऑफ टूथ रेलिक मिलिंदपानो एटा भी ठीक अछि ओके तापरे मालविका अग्निमित्रम ड्रामा बाय कालिदास एटा भी ठीक अछि एटा जो देखिना मुद्रा राक्षस एटा एक्चुअली समुद्रगुप्त नहीं एटा चंद्रगुप्त ओके एटा चंद्रगुप्त सो 38 रे कोन फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हे गेला रॉन्गली मैच पछारछि तो कोन हबो ओनली वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एबे असले मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आनी बेसंत कोन एपटे बद्रुद्दीन तैयबजी देछि ओके तापर देछि महात्मा गांधी सईद अहमद खान suppose how many of the pairs above are correctly matched कितला पेयर फर्स्ट आनी बेसेंट साइड रे कोन देछि फर्स्ट इंडियन वुमन टू सी वाज द फर्स्ट नॉट इंडियन वुमन फॉरेन वुमन थिले आ एटा जो जहा विषय लिखा छै ना एक्चुअली दिस इज सरोजिनी नायडू अरे कहा ऊपर लिखा है सरोजिनी नायडू ऊपर लिखा है ओके एटा सरोजिनी नायडू ऊपर लिखा है इट इज नॉट आनी बेसेंट तो एटा भूल गेला बाकी सब ठीक अछि बद्रुद्दीन तैयबजी कोन थिले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थिले महात्मा गांधी कोन थिले बेलगांव सेशन रे प्रेसिडेंट करथिले गोटी सेशन जोटा से प्रेसिडेंट हितले एटा बेलगांव टा कोठी छै कर्नाटक रे सईद अहमद खान एंड द नाइटहुड इन 1888 ओके बाकी सब ठीक अछि तो ये कोन तीन टांग स्टेटमेंट ठीक अछि गोटे स्टेटमेंट भूल अछि तो ओनली 3 होबे आंसर ओके विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 महादेवन एसआर राव से कौन देछि with respect to language of Indus Valley civilization select the answer using the codes okay SR Rao Kinner Wilson ଆଉ ପାର୍ପୋଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ सोवियत स्कॉलर्स रशियन स्कॉलर्स जो माने आगुर ताको सोवियत स्कॉलर्स कहउतले तो से माने कोन कोन मैच द फॉलोइंग देछि क्वेश्चन नंबर 40 वन टा कोन हो फर्स्ट टा कोन देछि महादेवन महादेवन कोन करथिले एक्चुअली से कोन करथिले महादेवन द्राविडियन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देथिले एंड पब्लिश एन इंप्रेसिव कंप्यूटर कॉन्कॉर्डेंस महादेवन ही से कोन करथिले कंप्यूटर रे डाटा बाहर कर देथिले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन माने से माने कोन द्राविडियन जो हाइपोथेसिस चलतुला सेटा कोन कहले से एक्सेप्ट कर देले कि हां द्राविडियन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ता कहउतले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन माने से माने एक्चुअली माने बाहर आसले आर्यन माने आसले द्राविडियन माने आगुरु थिले सेही जो हाइपोथेसिस ता कोन कि हम पढ़ले एटा महादेवन सी एटा भी करथले तो एटा हबो कोन सी हबो एटा सी हबो एटा वन टा सी हबो वन टा सी कोथरे गोटे स्टेटमेंट रहचे एउड देखि ही जान नबो टू टा 5 ऑप्शन फिफ्थ ऑप्शन कोन अटेम्प्ट टू रीड द स्क्रिप्ट एज कंटेनिंग ए प्री इंडो आर्यन लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली एसआर राव कहितले एटा ओके तापर एटा हे जिवो तो यार ऑप्शन कोन हबो सी हबो गोटे जानले माने इमी सो मैच द फॉलोइंग एथरा आसीची तमे गोटे ऑप्शन तुमको आसुथबो ना तापर रेस्ट हे जिवो काना तमरो फर्स्ट ता दि आसुथबो तापर देखो सबुतर फर्स्ट रो अलग अलग ऑप्शन अछि तो डायरेक्टली डी फर्स्ट ता दि सी जाननेलो तापर आराम से चलिबो
Okay. Okay. We'll go for the next question. Consider the following statement in speech of Canadian Prime Minister Mark Carney at the World Economic Forum at Davos. Davos रे जो World Economic Forum ହେଇଥିଲା, मार्क कार्नी जो Canadian Prime Minister ଥିଲେ, ସେ जो statement गुड़ा ଦେଇଥିଲେ, ସେ statement गुड़ा कोड़ा ठीक अछि. Okay. The middle powers, first statement called middle powers must act together. We are neither at the table nor on the menu. से कहिथिले the middle powers must act together. Obviously से एटा कहिथिले. But एट जो statement एट चेंज कर देछि. We are neither at the table nor at the menu नुहे. से कहिथिले if we are not at the table that means we are on the menu. जदि आमे टेबल रे मिसी कासी समस्त से मिसी कथा होउनु कि सब जिंस वाला प्रॉब्लम सडा आसी शेयर करूनु गोटे टेबल रे बसी की ता माने कोन आमे निश्चय मेनू रे थिबु तान कहिबा कथा एया थिला जे यूएसए जेमिति करथुला यूएसए तार जे चाहिदा स्टेट्स गुडा को आनी पाखर आनी बसौतला अन्य स्टेट्स को बाद दे देउतला जोडा कोन कहउतले मिडिल पावर्स जो मान थिले तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से कहले आगुरु कनाडा को मिसौतले जेतले सब प्रेसिडेंशियल टॉक होतला किबा सेंटर टेबल रे रखुतले बट नाउ से माने कोन करछन देबे सी एबे कनाडा को मिसौ नांदी ता माने कोन कनाडा को ऊपर आक्रमण होउछ केमदे ट्रेड टैरिफ एमिति आक्रमण उडा होउछ से सेइ पे कोन स्टेटमेंट दितले इफ वी आर नॉट एट द टेबल यदि टेबल रे नाहु दैट मींस वी आर डेफिनेटली ऑन द मेनू हमें मेनू रे अछु ओके इफ वी आर नॉट एट द टेबल वी आर डेफिनेटली ऑन द मेनू वी आर नाइदर एट द टेबल नॉर ऑन द मेनू सेटा नो ओके सेति पे कोन हे जीवो statement 1 is correct okay and statement 2 is wrong here option कोन हो c होबो c will be the right option question number 42 41 रे कोन हला c हला एबे question number 42 जीवा which of the following cities acted as the meeting point for trade routes for east and west from north to south from historical perspective ला कोन हो आंसर यार आंसर हबो मथुरा okay next with reference to temple architecture of Odisha consider the following Baidyanath temple near Sonpur has a lofty gateway the Baital temple at Bhubaneswar is designed in Khakra style Sun temple at Konark is living temple Chaushati Yogini temple at Hirapur is circular in plan 42 your option कोन हबो only 2 तेरा आंसर कोन हबो only 2 हबो मान दीटा ही स्टेटमेंट ठीक अछि एटा सी मर्चेंट जे मारि छी बट एटा सी नो हबो नै एटा ओनली 2 हबो दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि को दुटा स्टेटमेंट ठीक अछि फर्स्ट पढ़िया द बैद्यनाथ टेंपल नियर सोनपुर एज लॉफ्टी गेटवे ना एटा भूल अछि तुम पढ़ी छ बैद्यनाथ टेंपल जो सोनपुर अछि एते माने गेटवेटा जो लॉफ्टी थिबो लॉफ्टी माने कोन लॉफ्टी माने तो झाका से कि माने डिजाइन हे कि आर्टिकुलेट हे कि थिबो सब गेटवेटा हो त गेटटा भल से हे थिबो केबे सुनि छ सोनपुर विषय रे यदि गेटटा ते सुंदर थांता हम तो डेफिनेटली सुनि थांते या ऊपर तो सेति पे स्टेटमेंटटा भूल द सन टेंपल एट कोणार्क इज ए लिविंग टेंपल बिल्कुल नो एटा भूल अछि so only 2 statements are correct okay we'll go to the next question number 44 with reference to Joy Rajguru consider the following statements Joy Rajguru ko neki his full name was Joy Krishna Rajguru Mahapatra he was the royal preceptor to Mukunda Deva he mobilized an army of pikes and revolted against the British East India Company in 1804 एटा को समय रहला मराठा माने जाई सरला परे 1803 रे मराठा माने गले ता पर से माने आस्तिले on 6th December 1806 he was executed in Midnapur all these statements are correct ए option कोन होबो D होबो okay all 4 are correct okay next we'll go to 45 which literary source mentions Kalinga and Odra along with the sacred river Baitarani and goddess Biroja को रिवर टा माने से पता छै को जगह रे डाला मेंशन हेची एटा कोन होबो एक्चुअली एटा महाभारत रे अछि दिस इज नॉट वायु पुराण नॉट मनुस्मृति एटा कोठी महाभारत रे मेंशन अछि कलिंग ना हम ओड्र देश आ बैतरणी रिवर आ बिरजा मां को ना रे मेंशन अछि महाभारत ये रे एपिक रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैला द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एक्सक्लूड एडी भूले गला एडी कोन होबो इंक्लूडिंग होबो एडी कोन होबो the first statement the total number of
the total number of ministers excluding देइछि, this is not excluding, this is what including. प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करी कि केते 15%, should not exceed 15% of the strength of Lok Sabha. 91st constitutional amendment कोन कहितला, a cap on the number of ministers, ठीक अछि. The principle of 15% strength of legislative assembly also applicable to states in Indian Union, ठीक अछि एटा. The ceiling on the numerical strength of council of ministers is limited to 15% of the strength of the both the houses. केबे both the houses no, it is only for what Lok Sabha, एटा केवल लोक सभा पई, not for राज्य सभा. This is only what Lok Sabha. सेति पई fourth statement is wrong. यार ऑप्शन कोन है जीवो 1 and 4 not correct पचारछि ना, तो 1 and 4 होबो आंसर. Okay, we'll go for the next question. Who advanced the slogan एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे? एटा किए एडवांस करथिले, एटा करथिले श्यामा प्रसाद मुखर्जी. ओके, एतरा कुछ कहयार नै, ई स्लोगन टा देइथिले. एटा फॉलोइंग स्टेटमेंट देइछि आ तार एक्सप्लेनेशन देइछि. द फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड. द स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन राइट्स इन इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी सिक्योरिटी. केबे भी रेस्ट्रिक्टेड हे परन, केमिति एटा हे परिबो? जेतोल तमे पढुचो आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(2) एथिरो पे सब रेस्ट्रिक्शन ऊपर दिया है. आर्टिकल 19 टा कोन फंडामेंटल राइट्स किनु, एडी ओदी रेस्ट्रिक्शन ऊपर दिया है, तो एडी केमिति तो लिखा है कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, तो एडी भूल गेला स्टेटमेंट टा. आ एक्सप्लेनेशन टा ठीक अछि. सी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट चाहिले देई परिबो. सेठी कोन होबो आंसर, कोन होबो? स्टेटमेंट टा भूल अछि, एक्सप्लेनेशन टा ठीक अछि. स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट and explanation is correct. Clear? Now we'll go for the next question. 49. The concept of judicial review in India is primarily derived from the constitution of days, while the concept of parliamentary sovereignty is influenced by. कौन होबे एथरे? सी देइछि judicial review टा इंडिया रे जो आसीछि derived from which constitution? और parliamentary sovereignty, judicial review टा कोड आसले? एक्चुअली judicial review आसले यूएसए रो. एठु आसला कोन जुडिशियल रिव्यू, और पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी टा कोड आसला यूके रो आसला. सेति पे तमे बहुत कम न्यूज सुनथुबो कि पार्लियामेंट रो प्रोसीडिंग्स ऊपर कोर्ट किछि हस्तक्षेप करूछि इंग्लैंड रे. तो सेति पे पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी जो येटा कोड आसला यूके रो आसला, यूनाइटेड किंगडम रो. जुडिशियल रिव्यू टा आसला हमर कोड यूएस रो. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 49 रो ए. 50. A data protection law restricts sharing of personal data, but RTI activists argue it weakens transparency. The scenario highlight kon kurchi? Conflict between two fundamental rights, conflict between statutory rights, conflict between directive principle of state policy and fundamental rights, conflict between judiciary and executive. Your answer have a conflict between what? Two statutory rights. Okay, now I'll go for the next question. 51. Digital governance can enhance inclusion, it eliminates all form of exclusion. Statement dela, tar explanation dela. Now digital governance can enhance inclusion. सेथि पई हमें डिजिटल गवर्नेंस आनथिलु. हमें डिजिटल गवर्नेंस कोन पई आनथिलु? जे सब लोकन को इंटीग्रेट करि परिबा. जो जगह रे लोक मेन पावर पहुंची परने को रिमोट एरिया रे, से जगह रे इंटरनेट तो पहुंची परछ ना. एबे से कोन घरे बसी कि इंटरनेट रे भी सब जिंस करि परछ. तमे जिंदे इंटरनेट रे देखुछो, सेटा कोन हला वन टाइप ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. तो डिजिटल गवर्नेंस कोन इंक्लूजन एनहांस करछ. इट एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म ऑफ, सब एक्सक्लूजन को एलिमिनेट करि दो नै. कहले गोटे एक्सक्लूजन कोन छै? डिजिटल इलिटरेसी, डिजिटल डिवाइड जोटा, डिजिटल गैप जोटा, सेटा गोटे एक्सक्लूजन कि नै, से किमित एलिमिनेट कर दबो. एटा गोटे एक्सट्रीम स्टेटमेंट. सेति पे एक्सप्लेनेशन टा कोन भूल अछि. स्टेटमेंट इज करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग. यार कोन होबे आंसर? सी ही होबो. ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. 52. Consider the following statement regarding the departmentally related parliamentary standing committee. Permanent regular panels to frame legislation. They also examine the demand for grants for various departments during the budget process and review policies and performance of departments. There are 22 such committees consisting 31 members each. The estimate committee and public accounts committee are two most important among such committees. से पचार जी कोन हमर ट्रू कोडा, which of the above are true? Permanent regular panels to frame legislation. They doesn't form what? Legislation. एटा भूल अछि. से देछि permanent regular panels to frame legislation. They do not legislate. Does not.
सेमन लेजिस्लेशन केबे करले सेमन तो लॉ बनांतिनी किछि लॉ हैला सेटा रिव्यू करन सेमाने पार्लियामेंट्री कमिटी जोड़ा बा किछि गोटे जिंस होची पार्लियामेंट सेटा रिव्यू करा जाय सेमाने कानून तयारी करंती नाही तापर नेक्स्ट कोन देछि दे आल्सो एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रांट्स हां एटा ठीक अछि डिमांड फॉर ग्रांट एग्जामिन करंती देयर आर 22 सच कमिटीज ने केतरा अछि 24 का अछि ये 24 अछि ओके तापर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट द एस्टिमेट कमिटी and public amount committee are two most important amongst such committees. तो एटा एस्टिमेट कमिटी नुह एटा कोन हबो एटा भूल अछि ए स्टेटमेंट भूल अछि काहे की भूल अछि फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज द एस्टिमेट कमिटी एंड पब्लिक कमिटी नुह एटा फाइनेंशियल कमिटी जोड़ा फाइनेंस कमिटी नॉट डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटी नॉट डिपार्टमेंटली कौन नॉट डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी ओके सो ए स्टेटमेंट भूल अछि ओके ये जो एस्टिमेट कमिटी और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एटा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी नुह सेति पय एटा भूल अछि तो हमर कोन हेगला गोटिए मात्र ठीक अछि तो ओनली वन होबे आंसर एटा कोन हबो ओनली वन ए होबे आंसर 52 okay we'll go for the next question 53 in India blue flag program is implemented under the integrated coastal zone management program India has achieved blue flag certification for 18 beaches across 7 coastal states and 4 union territories age of 20 25 26 53 53 53 it is एटा जो अच्छी स्टेटमेंट blue flag certification is awarded to coastal sites that meet international standards of cleanliness water quality safety रे ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट जो देछि तो सर्टिफिकेशन इज ग्रांटेड बाय मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री कोड दोछि दिस इज गिवन बाय व्हाट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जोडा कोडी डेनमार्क रो अछि एफई दोछि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टा कोड की दोछि हमर जे गोल्डन बीच अछि पुरी रो गोल्डन बीच टा कोन गोटे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाइछि से सेटा की देछि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जोडा कोडी अछि डेनमार्क रे अछि माने ब्लू फ्लैग ऑल ओवर वर्ल्ड दोछि हम मिनिस्ट्री किमि कोन करिवो एठी यदि भी पढी भी नथिबो ए जिंसटा एटा को डायरेक्ट एलिमिनेट करि परथांतो सो only 3 will be the answer okay okay we'll continue their option kon hela only 3 have answer okay next question 54 assertion reason increasing atmospheric CO2 reduces carbon dioxide ion availability reduces carbonate ion availability in seawater reason kon hoche dissolved CO2 forms carbonic acid which releases hydrogen ions that bind with carbonate ions 54 kon hobo dita ko thik achi both statements are correct okay next 55 HPV vaccine जोड़ा थिला एबे न्यूज रे 2025 रो स्टार्ट करा आइची माने डिसीजन नि आइची जोड़ा 2026 से कोन लॉन्च कले प्राइम मिनिस्टर मोदी इट इज एम्ड एट कॉम्बैटिंग सर्वाइकल कैंसर द फॉरमोस्ट कॉमन कैंसर इन फॉरमोस्ट नु एटा एटी भूल अछि फॉरमोस्ट कोडा फॉरमोस्ट माने कोन जे अधिका स्प्रेड हेची फीमेल्स भीतर अधिका स्प्रेड को कैंसर हुए ब्रेस्ट कैंसर हुए ता परे आसे एचपीवी वैक्सीन ता परे आसे ह्यूमन पैपिलोमा सर्वाइकल कैंसर जोड़ा ओके ता परे आसे सर्वाइकल कैंसर सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग फर्स्ट स्टेटमेंट कोन हम रॉन्ग हैला
Second statement, the target group is girls of 14 years of age. Okay. Third statement, Gardasil 9 is a HPV vaccine. এটা নিউজ রে বহুত ଥିଲା Gardasil 9 টা. Gavi the vaccine alliance provided US $250 million in funding the vaccination children. Vaccinating funding for vaccinating children. तो कौन तीन टाइम स्टेटमेंट ठीक अछि बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेति पई से पचार हम कौन इनकरेक्ट कौन भूल कोड अछि तो ओनली वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेटा को स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1 ओके हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 the Hindu muhurta is of approximately 48 minutes each muhurta is divided into 30 kala nakshatra is the sun's asterism karana is half of tithi okay से देछि जो एथरे पचारछि कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू तो नक्षत्र अछि ना दिस इज नॉट सन एस्टेरिज्म सेटा कोन सन नु एटा कहार मून रो ए गोटी ही खाली स्टेटमेंट एटी भूल अछि तो ट्रू पचारछि कोन हबो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके वी विल गो फॉर नेक्स्ट consider the following statements originally the constitution provided for CGI and 7 judges supreme court number of judges act 1956 was enacted to increase the number of judges to 10 excluding CGI. The act has been amended 5 times in past to increase the strength of judges. The maximum increase in the strength of judges was by amendment 2008. ये कौन हबो 57 57 एटा कौन हबो 2008 एठी हबो 2026 एबे ही अमेंड हिच एटा कौन 2026 2008 में 2026 ओके ये कौन है 2026 कौन हला 33 आगु जोड़ा थिला एबे कौन है 38 ही हिच ओके इंक्लूडिंग CGI 38 ही हिच इंक्लूडिंग कौन CGI प्लस ओके CGI प्लस तापर नेक्स्ट एक्ट हैज बीन अमेंडेड 6 टाइम्स एटा 6 थर हे गला माने ए 2026 को लगे केटा कोन 6 टाइम्स हे गला ओके और ए स्टेटमेंट ठीक अछि और फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट यार करेक्ट ऑप्शन कोन हबो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो बी हैला यार करेक्ट ऑप्शन 57 नेक्स्ट विल गो फॉर 58 नाटो ऊपर पचाच नाटो वाज इन न्यूज़ नॉट करेक्ट पचाच कोडा भूल अछि NATO was created by 12 countries for Europe and North America. NATO was created on 4th April 1949. ठीक अछि. As of March 2026, NATO has 34 member states. This is wrong. NATO has now what? 32 member states, not 34, 32. So it पचारछि कोन? Not correct पचारछि. C will be the answer. Okay, we'll go for the next. Consider the following statements about passive euthanasia. Passive euthanasia ऊपर पचारा आइछि. The Supreme Court has never allowed passive euthanasia in India. Allow केबे करिनी एबे ही जस्ट जण passive euthanasia दिया वाला ता पूर्वरु भी दिया है. The Supreme Court of India allowed passive euthanasia passive euthanasia under strict guidelines. हां एटा ठीक अछि कारण जणकर जीवनटा तमे नउजो तो गाइडलाइंस भी ची रहिबो ना माने जे पारे से कहबो वाला मेंटलेटर सपोर्ट कर दबो कहबो passive euthanasia. Passive euthanasia was legalized in India by Navtej Singh Johar versus Union. This is not. This is wrong. एटा Navtej Singh Johar नुए legalize करा हला हरीश खान केस. हरीश खान versus Union of India. हरीश खान versus Union of India. एटा कोन हबो हरीश खान. बहुत न्यूज रे थिला हरीश खान versus Union of India. ओके सेठी कोन passive euthanasia दिया हेतला से कारण वेजिटेटिव स्टेट रे थिला बहुत वर्ष लेन रहिलानी सेति पय कोन हॉस्पिटल को कहला कि तार वेंटिलेटर सपोर्ट ता काढी नियो ओके हरीश खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो एटा भूल अछि स्टेटमेंट आर्टिकल 21 इज एसोसिएटेड विद राइट टू लाइफ भी राइट टू डाई विद डिग्निटी भी तो 1 and 2 and 4 आर करेक्ट ओके तेरा ऑप्शन नंबर कोन हबो सी हबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 60 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपारस एनिमल ओविपारस के platypus okay next 61 ओविपारस माने जे अंडा दिए आ सबु मामल थिले consider the following statements regarding the intertropical convergence zones ITCZ
इट इज ए जोन ऑफ हाई प्रेशर भूल एटी स्टार्टिंग ରୁ ହିଁ ଭୁଲ ଏଟା କଣ जोन ऑफ କଣ लो प्रेशर where trade winds diverge near the equator the convergence of diverge होबने एटा converge देखो दीटा भूल अछि the convergence of trade winds and rising air currents characterized it during July it shift northward सेति पे बेसी गरम होउची its shift northwards over the Indian subcontinent. It is associated with intense convective activity and cloud formation. And this is also correct. So, कौन first तीनटा statement और last तीनटा statement ठीक अछि. Statement number 1 is wrong. एटा कोन हो low pressure हो अब एटी कोन converge करछि. Low pressure माने air नाही से जगह रे. तो air नाही तो बाहर सब कोन air आसीबो तो फील करिया पे. तो एटा कोन हो low pressure हो तो आसुछि किछि जिंस कोन होछि converge होछि. Diverge माने कोन अलगा हबा दूरे जिबा. Converge माने भितर को आसीबा. तो दीटा पई कीवर्ड पई सेटा भूल अछि स्टेटमेंट दा. Okay, we'll go for the next question. 62. Answer the following statements regarding the ecological and geographical settings of lakes in Odisha. Odisha रे lake विषय देइछि. कांजिया lake टा कोठी अछि नंदनकानन रे ठीक अछि एटा फर्स्ट. सारा lake lies in coastal district of Puri and is influenced by littoral geomorphology ठीक अछि. Ansuban lake is inland freshwater lake located in the Mahanadi Delta region ठीक अछि. Pata lake is a freshwater lake एटा गजपति नुहे दिस इज गंजाम रे डिस्ट्रिक्ट रे अछि सराउंडेड बाय महेंद्रगिरी हिल रेंजेस तो only 3 statements are correct okay next question consider the following statements regarding demographic transitions and their economic implications for India and Odisha has already reached replacement level fertility TFR below 2.1 the demographic 63 okay the demographic dividend in Odisha is contingent on labor force participation rate which for women in Odisha are significantly lower than the national average okay the aging population in Odisha the aging index in Odisha is projected to increase sharply by 2041 increasing the burden of social security migration from Odisha to other states is predominantly circular and male dominated leading to what for feminization of agriculture मेल माइग्रेट करी होचंदी एबे कोन स्त्री लोक माने अधिक फील्ड्स रे अछंदी सेतबे से देछि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो कोन हला एटी फर्स्ट स्टेटमेंट देखो ओडिसा इज ऑलरेडी रीच्ड केमिति रीच कला ओडिसा एबे भी रीच करी नाही 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल को ओके सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बे एटा दी रॉन्ग हे गला त माने कोन if this is wrong okay so first statement कोन भूल अछि first statement are wrong then we'll go for second third statement ठीक अछि migration number fourth point ता बुझेली यार ऑप्शन कोन हबो 2 3 4 b टा हबो आंसर सॉरी c टा हबो आंसर यार ऑप्शन कोन हबो 2 3 and 4 okay we'll go for next question कोन 64 कोन अछि consider the following statements about tribal demography and policy implications in Odisha has the highest number of particularly vulnerable tribal groups 13 out of 75 जणा अछि एटा ठीक अछि स्टेटमेंट second statement reverse migration during COVID-19 resulted in temporary Odisha एटा भूल अछि okay this statement is wrong then statement 3 Odisha policy of PBTG development through habitat approach has been criticized for ignoring migrant PBTG okay एटा ठीक अछि due to the decadal growth rate of the ST population in Odisha is higher than non-ST population भूल अछि एटा due to जो improved माने एटा ठीक अछि ओडिसा रे ग्रोथ रेट अधिक अछि एसटी पॉपुलेशन मानकर बट पॉपुलेशन ड्यू टू इंप्रूव्ड एन्यूमरेशन नुहे मेनी रीजंस आउ बहुत बडा रीजंस अछि खाली एन्यूमरेशन नुहे तो फोर्थ रा रॉन्ग हे गला एति पय कोन हबो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके सॉरी ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट मुझे ठीक कली ना ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट
এটা কোন হবো only 3 statements ইয়ার অপশন কোন হবো সি 64 র आंसर কোন হবো সি ওকে 64 sorry 64 ର सी হবে आंसर 65 ଯିବା ଏବେ for which of the following purposes Indian currency fully convertible को समय हबो केतला कन्वर्ट हे परि इंडियन करेंसी रिपार्टीशन ऑफ रेमिटेंसेस इंटरेस्ट पेमेंट फॉर फॉरेन लोन्स इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेड ये चारिटी जो स्टेटमेंट पढ़िले ऑप्शंस एथरो ही इंडियन करेंसी कोन हबो कन्वर्टेबल हे परिबो इन दिस फोर स्टेटमेंट्स इंडियन करेंसी कोन कन्वर्टेबल बट दिस इज नॉट कन्वर्टेबल इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जोटा हम एफडीआई कहउछन एफडीआई रे इंडियन रुपीस कन्वर्टेबल नो एटा हम डायरेक्ट पढंती भी इकोनॉमी रे तो सेति पय कोन हे जिवो यार आंसर 1 2 4 and 5 ओके ऑप्शन बी हबो 65 रो ऑप्शन बी नेक्स्ट consider the following pairs and choose the incorrect one एथरो एंशिएंट हिस्ट्री बहुत आछि मोगालीपुत्र तिसा प्रिजाइडेड ओवर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ओके धर्मरथ रो एटा बृहद रथ एटा बृहद रथ हबो बृहद रथ जेहेतु एटा बृहद रथ हबो दैट मींस कोन एटा इनकरेक्ट अछि दैट्स व्हाई द इनकरेक्ट पेयर इज व्हाट बी 66 रो आंसर कोन हबो बी हबो आ किछ पढिया दरकार ही नै सर हबो बी ओके 67 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट एक्सपाउंड्स द प्राण अग्निहोत्र द फायर ओब्लेशन थ्रू ब्रेथ एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर बेसिक राइट एटा कोथरो अछि कौशिताकी अरण्यक तो 67 रो ए हबो 68 रे कोन all the information concerning the so called black hole episode is found in a single sided account of it by Englishman what is the name कोन थिला जॉन हॉलवेल या कोन थिला जॉन जी हॉलवेल तो आंसर कोन हबो सी 68 रे आंसर हबो सी 69 अनंत बर्मन चोड़गंगा एवं ओडिशा हिस्ट्री ऊपर आसला अनंगम 3 defeated Kalachuris and captured a major part of western Odisha Narasimha Deva 1 defeated Tugril Tughan Khan the Muslim governor of Bengal okay आउडे कोन भानुदेव 2 enacted the अनंत वासुदेव मंदिर भानुदेव 2 नथिले से किए थिले कुमारी चंद्रिका देवी थिले भानुदेव 2 नथिले से कोन थिले कुमारी चंद्रिका देवी कोन थिले कुमारी चंद्रिका देवी से कहा को बिलोंग करंती ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को ओके सेति पई 4 टा भूल हे गला कोन अब आंसर ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट okay we'll go for the next question 70 which of the following statements is not correct 1607 Jahangir declared Odisha as separate Subha so Subha of Odisha was divided into 7 sarkars Rajmandri was one of the sarkars Hasim Khan was the first Subedar of Odisha see पचाची not correct कोन एटा 7 sarkars नथला एटा 5 sarkars थिला this is 5 sarkars okay सेति पय बी हे जो तमर आंसर 70 रो बी we will go for 71 consider the following percent with respect to प्रजामंडल मूवमेंट को नेकी से देछि नॉट एसोसिएटेड किए थिले सारंगधर दास थिले सारंगधर दास वाज एसोसिएटेड विथ प्रजामंडल मूवमेंट पवित्र मोहन प्रधान इज आल्सो एसोसिएटेड विथ प्रजामंडल मूवमेंट हरकृष्ण महताब भी थिले प्रजामंडल मूवमेंट सहित राजेंद्र नारायण भंजदेव ये नथिले तो किए नथिले पचारछि ना नॉट एसोसिएटेड तो ओनली वन इज नॉट एसोसिएटेड हु राजेंद्र नारायण भंजदेव नेक्स्ट क्वेश्चन what is the pupil teacher ratio at the primary school level as mandated by right to education act 2009 ले केते हबो 30:1 not 40:1 this is 30:1
माने 30 जन पिला को गोटे शिक्षक रहा कथा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू ट्रिपल टेस्ट फार्मूला इज एस्टाब्लिश बाय इंडियन केबे नो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला की एस्टाब्लिश करथिले सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश करथिला सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश करथिला फॉर चेकिंग द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द लॉ माने कानूनटा ए विधेयकटा केते दूर युक्तियुक्त माने केते दूर आमे ताको इंप्लीमेंट करि परिबा केही हार्म होउना तो से कानून रो से लॉ इंप्लीमेंटेशन रो किछ हार्म होउन तो सेटा जानिया पे गोटे ट्रिपल टेस्ट फार्मूला देथिले की देथिले सुप्रीम कोर्ट देथिले सेटा कोन टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो नॉट करेक्ट पचारछि सेति पई ए हबो आंसर okay with reference to then Supreme Court of India consider the following statements. It is original jurisdiction in disputes between center and states. It can issue writs for enforcement of fundamental rights. ठीक अछि. It acts as a court of appeal. It can amend the constitution. It cannot amend the constitution. ये कौन amend करिबा? Article 361 अछि बा हमर amendment पई. एटा के करे? Parliament करे. It cannot. तो statement 4 टा भूल हे गला. एटा कोन है जो 1 2 3 only. Okay. एबे जिबा हमें 74 को ओके बे जिबा हमें कोन 70 74 गला हमरो 75 जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 75 a panchayat denies forest access to a community citing conservation laws despite traditional usage rights. Procedural fairness only, substantive justice and community rights, parliamentary sovereignty. से पचारछि ए पंचायत डिनाइड फॉरेस्ट एक्सेस पंचायत रे कोन करछि फॉरेस्ट एक्सेस को डिनाय कर दोछि सेठी से पचारछि व्हिच प्रिंसिपल वायलेट होछि को प्रिंसिपल टा वायलेट होछि ताकर कम्युनिटी राइट्स ता हमें देखिलेनी सेति पे कोन सबस्टेंटिव जस्टिस ता देखिलेनी कि हां से कम्युनिटी चाहू जे फॉरेस्ट को जिया पई बट हम ताको जिबा पई दोनु तो को रूल टा वायलेट होछि ऑप्शन सी टा वायलेट होछि कम्युनिटी राइट्स ता हम कंसीडर करना ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट 76 जिबा not all rights based laws leads to equitable outcomes structural inequalities affect access to these rights 76 not all rights based laws lead to equitable outcomes ठीक अछि एटा स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन कोन structural inequalities affect access to these rights ठीक अछि both statement and explanation are correct and explains the correct explanation of statement okay 76a 77 jiba the Assam State Assembly election was held recently with newly delimited constituencies consider the following points ला पढिबो एटा को नंबर 77 77 नामे ऑप्शन जिबा 77 ने कोन होबो how many of the above statements are true सब स्टेटमेंट सबुडा ठीक अछि ओके सब स्टेटमेंट्स ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो हम आंसर कोन हो जेतु लेट हे गलानी हमें टिके स्पीड अप करिवे with reference to fly ash management and utilization in India consider the following statements unscientific disposal of fly ash can lead to land degradation and ecological risks due to toxic elements and particulate matter thermal power plants in India are mandated to achieve 100% fly ash utilization तापर अछि द मेजॉरिटी ऑफ फ्लाई एश इन इंडिया इज यूटिलाइज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री more than 300 million tons of fly ash as gainfully used in 2024-25 okay एटा जो स्टेटमेंट एटी स्टेटमेंट 2 टा इट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट सेति पय हमें कोन अन्य स्टेटमेंट उडा सब ठीक अछि ओनली 3 को जिबा मात्र तीनोटी स्टेटमेंट ठीक अछि बिकॉज़ स्टेटमेंट 2 टा कोन कहली दिस इज द एक्सट्रीम स्टेटमेंट ओके स्टेटमेंट 2 टा कोन एक्सट्रीम स्टेटमेंट अछि थर्मल पावर प्लांट्स को कहै छै 100% केबे नु ओके ओके consider the following second consider the following statements biodiversity includes diversity at genetic species a statement
तापर द टर्म बायोडायवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन बायोडायवर्सिटी रेफर्स ओनली टू स्पेसीज डायवर्सिटी एटी भूल अछि एटी कोन हे जिवो खाली स्पेसीज डायवर्सिटी को नुहे बायोडायवर्सिटी माने सब स्पेसीज डायवर्सिटी पॉपुलेशन डायवर्सिटी तमर जेनेटिक डायवर्सिटी गला सब डायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी रेफर करिवो बायोडायवर्सिटी गोटे कोन अम्ब्रेला टर्म सेति पई 1 and 2 ओनली करेक्ट स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग ओके ये जिबा 80 नंबर क्वेश्चन राजेंद्र चोला हमें जल्दी जल्दी छाड़ दो बेटा को he assumed the title of Kadaram Kundan he conquered the Khmer empire he promoted local self governance he was succeeded by son Rajendra II एटा भूल अछि राजेंद्र 1 सन राजेंद्र 2 होबो बोली कोन कथा हिची तमे न भी जानथान तने एटा मार देथान कैंसिल हैला तो ए स्टेटमेंट गला he conquered the Khmer empire actually हम राजेंद्र जो राजेंद्र 1 हम पढुचंती जो राजेंद्र चोलो 1 तांकर से माने एलाई थिले तांका अगेंस्ट नथिले एनिमी नथिले ओके तो स्टेटमेंट 2 टा भूल गेला तो व्हिच ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर 80 रे कोन होबो बी होबो आंसर 81 Maiden salvo launch of naval anti-ship missile short range NSM SR was conducted at ITR Chandipur okay से कोन पचरछि नॉट ट्रू पचरछि कोडा भूल अछि एठी two missiles were launched in quick succession from the same fighter jet okay developed by Tata Advanced system in collaboration with DRDO it is a jet van control system developed indigenously no एटा बाहर आस्तिला so 1 and 2 and correct माने सॉरी एटा ठीक अछि जेट van टा जो एटा ठीक अछि आ टू मिसाइल्स वर लॉन्च ए दीटा भूल अछि नॉट ट्रू पचरछि ना 1 and 2 हबो ओके फोरम शॉपिंग तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 82 82 रे कोन अछि फोरम शॉपिंग कहले कोन बुझो चूजिंग ए फेवरेबल कोड फॉर लिटिगेशन ओके फोरम शॉपिंग माने कोन चूजिंग ए फेवरेबल कोड फॉर लिटिगेशन ओके नेक्स्ट 83 जिबा with reference to thematic coverage of 7 chakras of Indian AI Impact Summit consider the following कौन ह्यूमन कैपिटल इज वन ऑफ द की थीम्स सोशल गुड इज पार्ट ऑफ चक्रज हैला तापरे इंक्लूजन ट्रस्ट एंड रेजिलियंस एट सेंट्रल टू द चक्रज ऑल थ्री आर करेक्ट तो क्वेश्चन डी आंसर डी हैला नेक्स्ट जिबा 84 एबे खाली आंसर्स मु कहि जाउ छ बेसी एक्सप्लेनेशन दबानी कने लेट हे गलानी एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व दैट द सन ओवल्स और मूव्स इन ए कॉम्प्लेक्स पाथ रेदर देन रिमेनिंग परफेक्टली स्टेशनरी कोन पई होउ छ एटा ले कोन पई होउ छ 84 होउची because the net gravitational force from the planets is constantly changing and rarely cancels सेति पई एटा कोन हे गेला ऑप्शन बी हैला से ओवल करछि से आमे जो कोनथि सूर्य गोटे जगह रछि से गोटे जगह रहउनी से ओवल करछि मिति हैला हलुची वाइब्रेट कला वाला रहउची कोन पई होउची कारण नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द प्लैनेट्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होउची प्लैनेट्स रो इज कांस्टेंटली चेंजिंग एंड रियरली कैंसल आउट एबे कैंसल होबो की कारण प्लैनेट सब समान साइज रो नाते ना जुपिटर एते बडो अर्थ एते छोटो मार्स आउट ये छोटो मरकुरी छोटो तेम जो डिफरेंट साइज होउची सेति पई कोन होउची कांस्टेंटली कोन चेंजिंग होउची चेंज होउची सेटा आ कैंसल आउट केबे हुए नै यदि कैंसल आउट हेई थांदा ताले कोन सनटा गुड जगह थांदा हम दे हलंते की वाइब्रेट करंते की ओके we'll go for the next question 85 PET polyethylene tetraphthalate okay 85 why are these bottles generally intended for single use rather than long term refilling काहे के होची because the plastic is porous and can trap bacteria हम देखंत नि पानी बोतल सब हे जे कोन जे ब्राउन कलर हे थिवो माने जो यूज एंड थ्रो बोतल वाला बेसी यूज करले कोन पई होची कारण पोरस ऑफ बैक्टीरिया फैक्टीरिया रही होची जगह रे ओके एंड इफ नॉट क्लीन विथ हाई हीट व्हिच मेल्ट्स द बोतल आमे ताको कोन भाबी आमे भया हां बोतल टाको एबे कोन करबा ताको गरम कर दबा जा फल रे बैक्टीरिया मर जे बट गरम कले बोतल टा ही मेल्ट हे जिवो ओके सेति पई पीईटी बोतल टाको कोन करंदे थरिए मात्र यूज करंदे सिंगल यूज पई ओके 85 रे कोन हले ए 86 consider the following statements marked as assertion region El Nino events are often associated with 86 with weak southwestern monsoonal rainfall over India हाँ एबे El Nino चलती सेति पई हमर monsoon बहुत लेट आसीबो एथरो आ बहुत weak monsoon भी रहइबो El Nino leads to warming of sea surface temperatures in the eastern Pacific which disturbs the normal water cycle ठीक अछि and this is also the correct explanation हैला एबे जीवा हम नेक्स्ट क्वेश्चन 87 फुटलूज इंडस्ट्री ऊपर देइछि फुटलूज इंडस्ट्री ऊपर
they are highly dependent on availability of bulky raw materials. बिल्कुल भूल, एटा भूल, केबे डिपेंडेंट हुंदी raw material ऊपर. They can be located over a wide range of regions due to minimal locational constraints. ठीक अछि. Access to transport and communication networks influences their locational choice. ठीक अछि. तो फुटलूज इंडस्ट्री रे एटा भूल अछि. से क्वेश्चन कोन पछे नॉट करेक्ट पछे. तो ऑप्शन ए 87 रे 88 जीवा. 88 रे कोन? Consider the following statements marked as assertion in region. Assertion region देछि. The eastern ghats of Odisha is part of ancient Gondwana landmass. Okay. The region is predominantly composed of Precambrian, crystalline and metamorphic rocks that have undergone limited tectonic disturbance. Okay. The core statement question 88. 88 रो first question statement पढ़िया कोन माथरे पढ़े. The eastern ghats region of Odisha is part of ancient Gondwana. Yes, correct. It is definitely correct. Gondwana land ro part. The region is predominantly composed of Precambrian, crystalline and metamorphic rocks. सबु बेले जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी पढ़े जतले लॉन्ग जतले मु पीरियड्स पढ़ाए ना स्टार्टिंग क्लास रे से समय सबले पढ़े छेटा प्री कैम्ब्रियन रॉक स्टाइल हमर कोडी मिले हम ओडिसा और पेनिनसुलर इंडिया रे सेति पय एसर्शन और रीजन दी टांग ठीक अछि एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन सेति पय यार आंसर कोन हबो ए हबो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 89 विथ रेफरेंस टू इंपोर्ट प्रोफाइल ओके 89 एटा कोन हबो एटा हबो तमरो एटा हबो हम कुकिंग कोल कोट आनछन ऑस्ट्रेलिया आनछन यस करेक्ट ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया बट ऑस्ट्रेलिया तो जानि छिबो ना कुकिंग कोल हमर कोट आसे ऑस्ट्रेलिया रो आसे एटा 2 हैला ओके बी को जिबा बी टा कोन दैछि क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम बी टा कोन दैछि क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम वेस्ट एशियन कंट्रीज एठु आस्ति सेत पय तो बाधित होइछ ना एबे तेल पैसा काहे पडुची काहे कि हमरो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हमर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री जोडा अछि सेठो हम आनी पारु ना सेति पय हमर कोन होउची तेल पैसा पडुची तो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम कोड आछि यूएई सऊदी अरेबिया रे आछि ओके सो बी टा कोन हबो 1 हबो ए टा 2 हबो एबे A2B1 कोड अछि देखि दबा A2B1 तापरे C टा 3 हबो D टा 4 हबो ओके ऑप्शन बी टा है जो करेक्ट आंसर ओके विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 90 16 फाइनेंस कमिशन न्यूज रे थिला 16 फाइनेंस कमिशन एबे आछी फाइनेंस कमिशन 16 रिटेन द वर्टिकल शेयर ऑफ states in the divisible pool of central taxes at 41% okay तापर कोन देछि द कमिशन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी क्राइटेरियन विथ अ वेट ऑफ 10% रिप्लेसिंग द टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स क्राइटेरियन फाइनेंस कमिशन 16 कोन देछि डेफिसिट ग्रांट्स डिसकंटिन्यू कर देछि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स देखो द कमिशन रेकमेंडेड दैट स्टेट्स शुड रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट ले किछि कहि नै से दिस इज माने रॉन्ग so which of the above statements are correct obviously it is what 1 2 and 3 okay next is question number 91 consider the following statements about affirmative action and reservation policies in India okay 91 103rd constitutional amendment सेटा कोन अछि 10% रिजर्वेशन अछि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अप्लाइड रिजर्वेशन बट held that it cannot be applied to sub quota भूल अछि ओडिशा स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी ओबीसी इज द double and creamy layer concept income plus occupation excluding eta bhul achi reservation of persons with disabilities in Odisha panchayat election is calculated percentage of total seats eta bhul achi so only one statement is correct that is A okay next question jiba ए क्वेश्चन आज तो मु तयारी करथुली माने आंसर डिस्कस करथुली सारंग सहित अन्यतम हिस्ट्री टीचर सहित भी डिस्कस करथुली ए क्वेश्चन रे आंसर एते पर्यंत हम माने डाउट रे अछु एटा फाइनल आंसर की सहित देखिले हबो सो ए क्वेश्चन को मार्क करथो एबे इवैल्यूएट करन थो मु परे चेक करले जेतले फाइनल आंसर की आसो सेतर पाई भी जीवो माने कोन भाबी केटा पकै छथि वो डिस्कस करथुली यार ऑप्शन टा आसु नै ठीक रे ओके सो 93 जीवा the Mughal school of painting is characterized by सब ऑप्शन उडा अछि पढुथबो स्पिरिचुअल मिस्टिक सेकुलर एंड मटेरियलिस्टिक
सेकुलर मेटेरियलिस्टिक नथिला तो 93 ओके तो 5 6 और 7 तो नथिला ओके ए दुटा भूल अछि 6 और 7 नथिला स्पिरिचुअल मिस्टिक नथिला सेति में 6 7 को एलिमिनेट करो 6 7 जो जो स्टेटमेंट रे अछि ताको एलिमिनेट करो बस एलिमिनेट कर दियो तमर आंसर आसी जिवो जिंदे 86 अछि 86 अछि 86 अछि एलिमिनेट 6 कर दियो सब आंसर आसी जिवो तुमको ओके हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन सब पढिया पे पढ न थांदा When did Ganjam come under the British control? Ganjam केबे आस्तिला? केबे आस्तिला? गंजाम आस्तिला 1766 रे. गंजाम केबे आस्तिला? 1766 रे 1766 मसिया रे आस्तिला ब्रिटिश कंट्रोल अंडर को. फर्स्ट कोन बालेश्वर से मस होइतले. हरिशपुर जो रीजन टा अछि फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इला हरिशपुर टा कोड अछि बे जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रे अछि. हरिशपुर जो ग्राम पंचायत टा कोड अछि जगतसिंहपुर. Consider the following statement with respect to privileges of members. 96 privileges would be fettered by Article 19 of Indian Constitution. Privileges must be read subject to the Articles 22, 22 and Article 32 of the Indian Constitution. Immunity is available in relation to both civil and criminal prosecution. Immunity is available in relation to freedom of speech even in his or her private or personal capacity. 96 96 रो दीटा स्टेटमेंट भूल अछि काहे देखो से कही consider the following statement member of parliament privileges would not be fettered by article 91 भारतीय संविधान धारा 1901 ए द्वारा विशेषाधिकारी गुड़िक आबद्ध करा जीवो नाही काहे करा जीवो नाही एटा तो भूल अछि स्टेटमेंट privileges must be read subject to the article 20 22 and article 32 of the Indian Constitution immunity is available in relation to both civil and criminal prosecution भूल अछि एटा immunity is available to relation to freedom of speech even in his or her private or personal capacity हैला तो एठी दीटा स्टेटमेंट भूल हैला तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर ओके ओके नेक्स्ट 97 जीवा इन रेस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ कोडा भूल एंटी डिफेक्शन लॉ अनुसार कोडा भूल अछि एंटी डिफेक्शन लॉ इज फाउंड इन 9 शेड्यूल 9 10 शेड्यूल एट तो भूल मार देथान तो एट ऑप्शन रो 10 शेड्यूल होबा एटा हैला तापरे elected members who were not initially set up by a party but later joined one party face disqualification okay then nominated members join face disqualification if they join a political party after 6 months from the date they take their seat out achi the supreme court is empowered to make rules for giving effect to anti defection law supreme court eti kahi asibo anti defection law ta koudi huए parliament रे हुए तो स्पीकर रहिबो सुप्रीम कोर्ट तो रहिबो नहीं एठी एठी कोन पचारछि नॉट करेक्ट पचारछि ना 1 एंड 4 हे गेला सिंपल 1 एंड 4 टा रंग अछि 1 टा रंग अछि 1 टा कोन 10 शेड्यूल होबा कथा 4 टा कोन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ही करिवोनी फर्स्ट इन द फर्स्ट केस हला से रूल काहे तयारी करिया बुझिबो तो आंसर सी 97 सी 98 जीवा व्हिच टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज व्हेन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट एंड रैशनल चॉइस शेप पॉलिटिकल डिसीजंस एंड पॉलिसी आउटकम्स एटा कोन होबो 98 98 it is D public choice model policy okay तापर 99 99 टा कोन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बलवंत राय मेहता कमिटी ऑब्वियसली पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो आछि गवर्नेंस चैप्टर रो तमर ए टा फर्स्ट बलवंत राय मेहता कमिटी कोन रेकमेंडेड 99 रेकमेंड कोन करथिले 3 टायर करथिले तो एटा 1 हे जीवो अशोक मेहता कोन सजेस्टेड 2 टायर गवर्नमेंट 7th थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देला एलएन सिंह भी कमिटी कोन करथिले रेकमेंडेड ग्राम सभा फर्स्ट इंस्टेंस तो ए विल बी द राइट आंसर ओके India's biodiversity conservation ऊपर लास्ट क्वेश्चन इंडिया यूजेस market based instruments biodiversity conservation is linked to livelihoods environmental policies ignore global केमिति होबो एनवायरमेंटल पॉलिसी जोड़ा होउची ग्लोबल फ्रेमवर्क को देखिकी बुझियला एनवायरमेंटल पॉलिसी जोड़ा होउची कोठ ग्लोबल फ्रेमवर्क को देखिकी ही होउची ओके सेति पई
स्टेटमेंट कौन तुम 3 टा भूल गला जो 3 टा भूल गला हमर आंसर आसी गला क्लाइमेट फाइनेंस इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन एटा इजी स्टेटमेंट थिला तो 1 2 एंड 4 होबा आंसर ओके थैंक यू स्टूडेंट्स एबे हमर तुमर बहुत जल्दी मेंस बैच आसुची ओके तुमर बहुत जल्दी हमर एई वीक भीतर ही मेंस बैच आसुची आउ नेक्स्ट कोन लिसाज रो निजर गोटे अछि सी एटा अछि स्लाइड रखी छ बुक रो लिसाज रो तार निजर बहिटा नहीं आसे लिसार तार निजर गोटे मेंस पई सी करिछि गोटे बुक करिछि सेई बुक तार माने कोन मेंस GS1 GS2 GS3 आई वाज गोइंग थ्रू दैट बुक वेरी लुसिड वे पूरा अंडरस्टैंडेबल वे रे सेटा हेछि सेई बहिटा तयारी करा हेछि मैं सारू पचारतली बहुत हमर टॉपर्स माने यूपीएससी रो सेमाने भी कहिसंती आसी कि सर सेई बहिटा बहुत भलो लागिला काहे कि ना माने जते सिलेबस वाइज क्वेश्चन उडा फ्रेम हेछि सेटा तुम ऑफिस से कांटेक्ट करी पाई परियो बा नियरेस्ट बुक स्टोर रे देखिबो पाई जिवो अब यार मेंस बेस्टा मु सारू कहतली कि टिके जल्दी स्टार्ट करिया पे काना मते जा लागु जे कट ऑफ अराउंड 50 टू 60 जिवो ओके कट ऑफ यूआर पई अराउंड 50 टू 60 जति किला डिस्कस करलेनी पिलांक फीडबैक नेलिनी कट ऑफ अराउंड केते जिवो यूआर कथा कहूची बहुत कम जीवो कट ऑफ जीवो 50 टू 60 सो जहा को लागुची माने यूआर रो तापर निजे निजे 5 मार्क 10 मार्क कमे दियो अन्य अन्य कैटेगरीज माने जो माने अछन फीमेल माने एटा यूआर मेल कथा कहूची काना तर सीसैट टा भी जमर जीएस2 टा जो सेटा भी देखितली बहुत टिके हला माने कष्ट आसितिला तो सेति पई माने लेंदी थिला पेपर बोथ जीएस1 जीएस2 लेंदी थिला तो सेति पई कट ऑफ 50 टू 60 लाय करिवो एतर सीट भी संख्या अधिक अछि एंड आल्सो जो मानकर कट ऑफ देखुचो माने ए 50 60 भीतर अराउंड आसुची तो मु तो कहूची जल्दी गोटे काना हमर लिसाज आईएस रे कोन दुईटा मेंस बैच सब बेले लॉन्च हुए गोटे एबे जो एग्जाम सरला परे तापर 1 वीक भीतर ही स्टार्ट हो गोटे बैच माने जो माने स्टार्टिंग रु चाहउछन कि भलो आंसर लिखिबे आ गोटे तमरो सेकंड बेस्ट हबो जोडा रिजल्ट बाहरसला परे जो माने डाउट रे अछ कि मोर 40 रोची कि 45 रोची हबो कि नहीं एना कट ऑफ बहुत कम कम जीवो तमर जो 2022 21 जो 21 या 22 जो 23 रे जोटा हितला एग्जाम टा तार कट ऑफ तुम जानछो 48 जाइतला यूआर मेल रो तो सेति पई एथर बहुत कम रहबो कट ऑफ सीट भी अधिका अछि आ क्वेश्चन पेपर भी लेंदी थिला बिट लेंदी इट वाज बिट लेंदी तो जो मानकर कट ऑफ या भीतर लाय करछि किंबा ताटू अधिका रहउछि यूआर मेल कथा कहउछि तो से माने तुरंत आसी कोन एनरोल करनियो फर्स्ट बैच रे हमर जो फर्स्ट मेंस बैच होबो नि हमर फर्स्ट मेंस बैच स्टार्ट हे जिवो आफ्टर 1 वीक विद इन 1 वीक फर्स्ट मेंस बैच स्टार्ट होउछि कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट हमरो जो ओसीएस आंसर मेंस आंसर राइटिंग बेस्ट अछि तमर स्टार्ट हे होछि कोन माने 25 जून नु स्टार्ट हे जिवो ओके 25 जून नु स्टार्ट हे जिवो आ गोटे बैच भी हबो जोटा तमर आंसर रिजल्ट बाहरसला परे प्रीलिम्स रिजल्ट बाहरसला परे तो जो माने डाउट रे अछो तमे भी चाहिले आसी कि आंसर लिखि परिबो एनाटा दैट विल बूस्ट तमरो आंसर राइटिंग तमरे कैपेबिलिटी रे बूस्ट करिवो तमे चाहिले निजे कोड स्टैंड करछो एटा भी जानि परिवो ना सीमित न प्रीलिम्स हल्ला मात्र ही जाके लिखिबो मेंस आगुरी भी प्रैक्टिस दरकार सो दिस इज ए माने कोन एथरो 400 से 470 प्लस सीट्स अछि 465 70 सीट्स अछि तो हमें एबे टू काहे न स्टार्ट करिवा तो सेति पई मु सारू कहि कि एटा करेली कि जाउडी जल्दी हमें जेम करिवा ए बैच टा आछि 25 जून रु नेक्स्ट बैच आसीबो तमरो रिजल्ट बाहरसला परे सेकंड बैच तो जो माने भाबुचो 50 ऊपर रहिबो आउ यूआर फीमेल ता अन्य कैटेगरी जो माने अछि 5 मार्क 3 मार्क केमते कमे दियो तमरो दी एतिकी भीतर लाय करूची मार्क टा प्रीलिम्स मार्क आंसर की तो देखिलो ताले जल्दी आसी कि जॉइन कर दियो कांटेक्ट करनबो ए दुईटा नंबर रे ओके ए दुईटा नंबर रे कांटेक्ट करनबो आउ जो तुम कहउतले बड लिसाज रो मेंस बुक टा एटा तो तार फोटो टा बट मु तुम देखौची केमिति अछि तुम देखि पारथु कि नहीं पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे अछि पूरा लुसिड वे रे पूरा लिखा आइची माने इवन टॉपर्स माने भी एई थ्रू ही पढी कि से माने क्लियर करछन तो से माने जदी क्लियर करछन तमे काहे कि नु कहबा कथा है तो गोटे हला जॉब पाइबा पई ओनली 500 600 खर्च करि परिबोनी ओके ए बुक टा तुम ऑफिस के नियरेस्ट बुक स्टोर कलेक्ट करि परिबो आउ ए जो बैच टा आंसर राइटिंग बैच
25 जून 2026 रु स्टार्ट होउछ 25 तारिख रु हमें जल्दी रखुछु आ उटे बैच हबो सेटा रिजल्ट भारसला परे सो एई जो दुईटा नंबर अछि ए दुईटा नंबर तुम देख पारथो नै ए दुईटा नंबर रे कांटेक्ट करो आ तुम डिटेल्स से जानि परिबो मु कुछ बेटर हबो आसिक ऑफिस बुली के पळेबो तुम देखि परिबो तुम जिंसटा जानि परिबो फोन करियो कोन फोन करिवो तुम बेटर हबो ऑफिस टा बुली के जाई परिबो हला बुझी ओके थैंक यू एवरीवन गुड नाइट ऑल द बेस्ट